So hello guys, welcome back to the stream. Finally guys, the wait is over and welcome back ladies and gentlemen. This is the first match of the day and we are about to start head on towards the map of Miramar. Starting about the plane path, पाटोना से प्लेन पाथ की शुरुआत होकर लॉस लेनस होते हुए 13 बाउंड पे जाकर समाप्त होता हुआ लगभग मिरामार के ईस्टर्न एजेस को फेवर करता हुए प्लेन पाथ. The plane path mostly favors the eastern side of the map, and now guys, we all have 15 teams, 46 players, which will be fighting against each other, which will be heading against each other to get that winner chicken dinner in this first match of Miramar. पहला ये मुकाबला. दर्शक जनों, हल्की सी इंग्लिश कास्टिंग में ट्राई कर रहा हो तो आप सभी लोग फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप सभी लोगों को. वो ब्रोकन इंग्लिश में बात कर रहा हो जो, लेकिन फ़िलहाल के लिए कंटेंट दे दो. एंड उनके टीममेट्स, दिस टू प्लेयर्स, दे आर रेडी टू गेट देयर ओपोनेंट्स डाउन. वी कैन सी वी प्लेस एंड हिज टीममेट्स. these four players are ready to get this battle. चले गए, छोड़ते हैं भाई, अपनी कास्टिंग पे दोबारा से चले आते हैं. बहुत तकलीफ है गाइस इंग्लिश के वर्ड्स फ्रेम करना. चलिए, वी प्लेस, उनके पास एक M4 और ऑल्सो यहाँ पर मोलोटॉव का इस्तेमाल करेंगे. ये मोलोटॉव से कनेक्शन बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए राइट पिक का इस्तेमाल करता हुआ ये प्लेयर एंड इज़ अबाउट टू यूज़ दैट मोलोटॉव. Until then he is waiting for his teammates to cover him up. एंड चलिए एक और बार लूट की और फोकस करता हुआ खिलाड़ी HP स्पोर्ट्स एंड उनके टीममेट्स. फ़िलहाल के लिए 3 खिलाड़ी मौजूद मिरामार के पिकाडो के अंदर. यहाँ पर ड्रॉप क्लास हमें देखने को मिलेगा 3 टीमों के बीच में. These 3 teams, they have decided to take this drop class, and also they have 3 each players playing this first match of Miramar, and let's see which team will be winning their drop class and will get that decent number of finishes and head on to get a very great start in this map of Miramar. 46 player, 15 teams. एक और बार इंतज़ार करेंगे. दूसरी ओर यहाँ पर ये 46 खिलाड़ी, till now we haven't seen even a single player who gets knocked. भाई लोग, जो भी बंदे चैट सेक्शन में आएंगे रिस्पॉन्स ज़रूर से देना. ट्राई कर रहा हूँ मैं बस. और गेमरनो स्पोर्ट्स के वेबसाइट को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. मेक श्योर you sign up through our website Gamerno esports. The website link has been given below in the description. You all can join and sign up with your teammates so that you can participate in our regular teacher schemes with a prize pool of rupees 25 and also free entry of cost. Moreover, we Gamerno esports regularly organize these teacher schemes and also Sunday showdown with a prize pool of 500 rupees and also free entry. दर्शक जनों, जो भी बंदे देख पा रहे हैं, मेक श्योर करना. धीरे धीरे मैं हल्की हल्की से सीखना स्टार्ट करूँगा और फ्लुएंटली जैसे हिंदी कास्टिंग कर रहा हूँ वैसे ही इंग्लिश कास्टिंग जल्दी से हम सीख लेंगे. लेकिन पढ़ते ये फाइट की और कंटेंट दे दो. ही इज़ holding a grenade, he wants to throw that grenade and he wants to get an opening knock, but in this drop of Partona, these two teams, they are still waiting to fight against each other. Contendero, he has a micro Uzi and also an UMP, which is a very lethal weapon in close range encounter, but he still waits for his opponent to make some mistakes. But these 4 players, they are also waiting for their opponents to make that mistake. Which team will get that fast knock? And also Nick F, he will be the first player to getting that knock for his team. And now there's a chance for his team to go towards the opponent and make sure that they finish that knock player. Devil, जिनको डाउन किया गया था. Currently Devil,
He's waiting for his teammate to revive him. He wants to get revived, but since there is a distance between Nick AF and him, so there is a chance of revival. And finally his teammate, he took a risk coming from the open, and now ये रिवाइवल दिया जाएगा ज़रूर. गाइस जो भी बंदे देख रहे हैं चैट सेक्शन पे हंसना मत, बस धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ मैं. देखते हैं किस तरीके से होता है आज का ये इंग्लिश कास्टिंग. बीच बीच में हिंदी पे आ जाऊँगा, लेकिन पहला वो नॉक निकला ज़रूर. अभी तक वो फिनिश लेने के लिए निक एफ एंड उनके टीममेट्स, उन्होंने वो जोखिम उठाना बेहतरीन नहीं समझा. दे आर रेडी टू रिक्स एंड ऑल्सो दे आर वेटिंग across their hard covers. Anyways, Sneak AF and Smokey, these three players, they got the first knock of the match, and now anyways he got the 6x from his teammate. Finally an M249 and also Ace 32, which is also a very lethal weapon for close range encounter. Slowly and steadily this team, they want to head on towards their opponents. Let's wait and see how much time it will take for the first player to get finished. 15 teams and 46 players, they are still alive and they are still trying to get the first knock, that first finish of the day. Miramar, the biggest map of BGMI, still awaits to get that first finish of the day. Contentato and his teammates, Gordon is live, still waiting. It's a 2v4 scenario for them. And Gil, Garib, Sagi, Wifless and Mr. Assaulter, they are still waiting to get the first knock. They don't want to risk any of the players. Gil, slowly and steadily, he is trying to loot, get that better loot for his team, for himself in fact. Also there is another team in Campo Militar. We can see MVL Sports. These four players, they are very aggressive, but for the start, a passive approach by them. MVL Sports, Suhas, VK, Manish and Victor, they will still try to go inside the zone after LG to watch. चले गाइस, बढ़ते हम लोग एक और बार हिंदी कास्टिंग की ओर. हल्का सा कोशिश, हर एक दिन थोड़ी थोड़ी टाइम हम लोग आकर कास्टिंग करेंगे इंग्लिश में, ताकि आप सभी लोगों को भी वो फ़नी मोमेंट मिले ज़रूर, कास्टर की ओर से एंगेजमेंट मिले ज़रूर. लेकिन 1 मिनट का समय देना गाइस, हल्के से देरी के बाद मैं ज़रूर से वापस आऊँगा. में, ताकि आप सभी लोगों को भी वो फनी मोमेंट मिले ज़रूर, मास्टर की ओर से. Let's go guys, we are finally back again and Nox is live. Welcome to the stream मेरे भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम पर. आज आपकी टीम नहीं आ पाई, सॉरी, कोई बात नहीं मेरे भाई, हमारे स्ट्रीम पे आपका स्वागत है. एंड ऑल्सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर टीम टू जॉइन in our scrims tomorrow sharp 11 AM. The slots will be live again and the rest of the viewers, you all have a chance to register again.
बट करेंटली बताना गाइस कैसा चल रहा है हमारा इंग्लिश कास्टिंग। धीरे धीरे से ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन पार्टोना पे एक और फाइट शुरुआत हो चुकी है। विप्लेस एंड करीब सेगी द फर्स्ट फिनिश ड्यूरिंग दिस फाइट। चलिए गॉडेस लाइव डिफेंड करना चाहते हैं अपने कंपाउंड को, उसी के साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश। ये स्टनिंग नॉक उन्होंने निकाला जरूर, बट द नंबर्स गेव advantage that was already with team number 4, and very easily they got the 2 finishes during the start of the match. And also नॉर्थ ईस्टर्न छोर पर एक और फाइट VK स्पोर्ट्स के गन पार्क। बहुत ही तकलीफ है गाइस इंग्लिश कास्टिंग करना, वर्ड्स प्ले निकल ही नहीं रहा है। देखना पड़ेगा बाकी कस्टर्स का, उसके बाद सीख कर दोबारा से ट्राई करेंगे। लेकिन चलिए एक और बार यहाँ पर फाइट की शुरुआत। 40 ये प्लेयर्स, 13 टोटल ये टीम्स अब यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। वो फाइट करने के लिए बिल्कुल से बेताब है। पिकाडो पे वो फाइट हमने विटनेस किया था थोड़ी देर पहले। पिकाडो पे इनफैक्ट एनिमीज और उनके टीममेट्स ने वो नॉक निकाला था ज़रूर, लेकिन क्या वो फिनिश उनको मिल पाया? पिकाडो, HP स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ी वो एक एक फ्रैग लेकर शानदार तरीके से अपने ड्रॉप क्लास में जीत हासिल करके दिखाया। चलिए इसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्राई करते हैं। बाकी जो भी बंदे देख पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए आप लोग बताओ ज़रा कैसा चल रहा है हमारे ये हल्का सा कास्टिंग। भले ही हम चौक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से सीखने की कोशिश है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम लोग दोबारा से हिंदी में कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। फ़िलहाल के लिए 5 की वाचिंग आ रही है, लेकिन अभी तक एक भी लाइक वो हमें देखने को नहीं मिला। 3 मात्र लाइक्स गाइस, क्या कर रहे हैं आप? गेमरनो स्पोर्ट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये लाइव स्ट्रीम जो कि डेली बेसिस पे हम लोग करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रिम्स। आप सभी लोगों को बस रजिस्टर करना होगा और पार्टिसिपेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री के साथ 25 रुपीज़ के प्राइस पूल के हकदार बन सकते हैं एक एक मैच को अगर जीतेंगे आप। फाइनली ये पहला मुकाबला GLC स्पोर्ट्स बैक टू बेसिक्स वो फाइट करना चाहते हैं। MVL स्पोर्ट्स के खिलाड़ी सुहास को डाउन किया। विक्टर वो घुटनों के बल नजर आएंगे। GLC स्पोर्ट्स रेक्सिन अकाजा फिलहाल के लिए नॉक नजर आ रहे थे। रेक्सिन को रिवाइवल दिया जाएगा। बेहतरीन ये ट्रेड गेम सोल 001 उन्होंने AKM एंड डबल बैरल शॉटगन का इस्तेमाल किया, अपने टीममेट के लिए एक शानदार कवर प्रदान किया। वो नॉक निकाला ज़रूर, और ये ट्रेड निकालने के बावजूद सामने से एक और टीम का आगमन होता हुआ। इनफैक्ट MVL स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो चार्जिंग करने के लिए तैयार। मनी स्मोक के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश है। UMP का ये बेहतरीन कनेक्शन बनाकर दिखाया। एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे VK। बैक टू बैक वो नॉक्स उन्होंने निकाल कर दिया। फाइनल बैटल बिटवीन दिस 2 प्लेयर्स, इट्स ए 1v1 सिचुएशन, और ये कनेक्शन बन के गया जरूर। एक 1v3 क्लच MVL स्पोर्ट्स के VK। बॉय ओ बॉय, एक इम्पॉसिबल और स्टनिंग क्लच इन्होंने पुल ऑफ करके दिखाया। ये बेहतरीन एंगल बनाकर इस UMP के साथ एक शानदार क्लच पुल ऑफ करके जाते हुए MVL स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, एक स्टनिंग क्लच बाय दिस स्टनिंग प्लेयर। वेरी इंप्रेसिव गाइस, दिस प्लेयर हैज टर्न्ड a 1v3 clutch, but during this fight he also lost his 3 teammates, and the numbers game which was already present with this team. Now only one player VK will have to currently play this match of Miramar solo-handedly. Finally one more team which got eliminated at 13th position, TLT Sports Arbit, using that M4 he got an opening knock for his team. Let's check whether he will get a finish or not. DLT Sports Arbit, the first knock for his team. He has sent Buggy trying to rush Mr. Xanax. His elimination is very near, until and unless his remaining teammates will join the fight and try to cover him up. But Mr. Xanax, the hope, the little hope that was with him is now currently fading because his teammates are very quite far. एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और फाइट हमें देखने को मिलेगा। हायर ग्राउंड का कंट्रोल किलर अर्पित के खिलाड़ी यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं। मिस्टर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को फंसाया जाएगा। लोअर ग्राउंड पे वो 2 खिलाड़ी फंस चुके हैं। बाइक का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश, वो कनेक्शन बेहतरीन आया ज़रूर। एजन बहुत ही लो किए जाएंगे। वो डैमेज ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट हुआ एजन के ऊपर। एंड नाउ किलर अर्पित ही इज ट्राइंग टू रश, बट द सरप्राइज एंगल
the surprise element by Mr. Esports. One player was waiting in the vehicle और खिला रहा अब फंसते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में. Finally प्रदीप, उन्होंने वो नॉक निकाला. Mr. Samurai getting that knock for his team, the crucial knock which will release some sort of pressure from his team. And now also T Sports Kaiser, he will have to play all alone. Killer repeat, that mistake caused his elimination. And now T Sports Kaiser, solo-handedly he will have to fight against these three players. Mr. Esports, although they have lost one player, but a basic start, one finish will be registered in the name of Mr. Samurai. On the other hand, HP Smokey, उनको डाउन किया गया. HP Smokey समापन के बहुत ही करीब. और ग्रोजा का यहाँ पर प्रहार. जेब्रोनिक्स टी स्पोर्ट्स के केजर को डाउन करके एक 1v1 की ये फाइट थी और उस 1v1 के फाइट को जीत में तब्दील करके दिखाया. टीम HP स्पोर्ट्स, उनका हो चुका है पतन. 3 ही फिनिशर्स अपने टीम के लिए बटोरेंगे और अब ये 27 खिलाड़ी, 10 टोटल टीम्स, आगे बढ़ना पड़ेगा उनको. फाइनली गाइस, टॉप 10 टीम्स which are still surviving, they are still hungry to get a winner chicken dinner and also to have a great start of the day by conquering this map of Miramar. Let's see guys which team will be the final team that gets a winner chicken dinner. But sign वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको स्पॉट किया गया. ब्लैक स्पोर्ट्स शार्क, एक शानदार कनेक्शन. QBZ का वो बेहतरीन स्प्रे, द स्प्रे विद QBZ was very astonishing, and as soon as he knocked that player, he instantly finished the player and he gets that one finish for his team. Black Esports Shark, he is heading towards the direction where a team is already holding that position. Now Black Esports Shark, he will be aware of his team, in fact opponents. Then finally he wants to move aside from his opponents. In fact, one more player is present who will have to give back up to his team. Black Esports player अकेले फंसे हैं अलग डायरेक्शन में. ये दो खिलाड़ी एक स्प्लिट, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न छोर पर एक फाइट. TSW घोष, दिस व्हीकल इज अबाउट टू गेट ब्लास्ट. चलिए, व्हीकल ब्लास्ट होने के कगार पर. जो भी बंदे देख पा रहे गाइस, इंग्लिश कास्टिंग कैसे चल रही है बताना. पहला ये कास्टिंग है इंग्लिश की, स्टार्टिंग है गाइस, तो रूकी के लेवल पर मुझे आंकना स्टार्ट ही कर रहा हूँ बस. एंड ऑल्सो मिस्टर आइजन, he gets another knock. Once here Tomato, he will be taken down with that M4. And Aizen, he is ready to get that finish for his team. And his esports devil, 36 players, 10 teams are still alive and still fighting for that winner chicken dinner. This is the third stage of the map, and now we all have 1 minute 35 seconds, and after that this circle will be shrinking very fast. चलिए, हल्की हल्की सी हिंदी भी लाना पड़ रहा है बीच में, क्योंकि अभी हम उतना फ्लुएंट तो नहीं हुए. चलिए, बात करना लगे और कास्टिंग करने में बहुत ही डिफरेंट है गाइस, लेकिन ट्राई करें गाइस. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. ये लाइन तो सभी ने सुना होगा. करेंटली हमारे बेस्ट कास्टर ऑफ द ईयर जो कि एंकीबॉट, वो हमेशा यूज़ करते इस लाइन को. मिस्टर आइजन, ही गेट्स अनदर प्लेयर डाउन, एंड मिस्टर आइजन बैक टू बैक नॉक्स from his side. Let's see Mr. Aizen, how many finishes till now he has acquired for his team. He got that 2 finishes, but still TSW Esports Coast, one and only player who is still surviving, using the smokes to get his player revived. Mr. Aizen, one more knock from his side, and now the connection through the smokes. TSW Ghost, he needs to get thrown down, and finally he's healing his HP through 24 players, 10 teams are still surviving. Zebronics, he has a very good advantage of the higher ground. He can spot his opponents, but TSW Esports, they are trying to shoot him down, but he still gets a cover of this tree.
And also this is a quite better, in fact better retaliation fire. Also spots tomato. This spray could be better, but Mr. Samurai will be the one who will get tomato down. Final top 9 teams. Mr. Ryzen, he's still alive. They will still try to get the pieces more than needed. Mr. Esports, 3 players, 3 finishes. Still the numbers game advantage are on their favor. Finally we can witness these 22 players, 9 teams which are still alive and trying to get that winner chicken dinner. And also Zebronics, he has been eliminated at 9th position. 21 total ये team, in fact players are totally teams. चलिए आखिरी के स्टेजेस को हिंदी कास्टिंग के साथ करेंगे ज़रूर. एक और बार यहाँ पर फाइट करने की कोशिश है. ये टॉप 8 टीम्स दर्शक जनों आप सभी के सामने. अब यहाँ पर ये टीम्स फाइट करना प्रीफर करेंगे और अब इन सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती. मिरामार के मुकाबले को बेहतर तरीके से ये शुरुआत करना चाहते थे आज के दिन के मिस्टर स्पोर्ट्स. हल्का सा वो सफलता प्राप्ति करी है उन्होंने. 4 फिनिशर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन एक और खिलाड़ी को स्पॉट किया गया. मिस्टर सामुराई, डेथ स्प्रे वाज वेरी गुड. ही टेक्स डाउन सिंस 2018 and now he will be waiting to get that finish. Already this team has 4 finishes, 3 men strong. They are already waiting to get a winner chicken dinner, but the shift of the circle, a hard shift towards the northern side. Black Esports, these 2 players are exactly at the center of the map, which will be in fact very crucial and very important for them because they have a certain hard covers. Final top 7 teams which are ready to head on to get that winner chicken dinner. They want to have a very great start. चलिए गाइस, पहला कास्टिंग है इंग्लिश का. हल्का हल्का सा सेंटेंस फॉर्म करने में परेशानी आ रहा है, लेकिन सिंस 2018 he gets revived again but he gets down again. He has been knocked again since 2018. उनको रिवाइवल की नीड है. उनके टीममेट उनको व्हीकल में डालना चाहते थे, लेकिन एक स्मोक का कवर काफ़ी रहेगा रिवाइवल देने के लिए. 54 सेकंड का समय बचा है. इसके बाद ये सर्कल एक और बार क्लोज इन होने के लिए तैयार होगा. वो श्रिंक इन होता हुआ नजर आएगा हमें. और दूसरी ओर FGX स्पोर्ट्स के अमू, वो खिलाड़ी अब यहाँ पर समाप्त होने के बहुत ही करीब. ब्लैक स्पोर्ट्स के सार्क, वो अपने टीम के लिए सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने टीममेट को बचाना पड़ेगा. ब्लैक स्पोर्ट्स बियर वो डाउन किए गए, लेकिन एक रिवाइवल पॉसिबल है. दर्शक जनों, जो भी बंदे देख पा रहे हैं, मेक श्योर करना आप सभी लोग लाइक करें, गेमरनो ई स्पोर्ट्स के वेबसाइट को ज्वाइन करें ज़रूर. एंड ऑल्सो आप सभी लोगों का एक और बार स्वागत है हमारे मिरामार के मुकाबले में. 20 टीम्स, इनफैक्ट प्लेयर्स, 7 टोटली टीम्स जो बच रहे हैं. These teams have survived stage number 4 of the match. And अब हमें एक और हार्डशिप देखने को मिलेगा. Final 5 seconds. After that the play zone will start to shrink in again. And this shrinking of the play zone of the circle in fact will force in some teams to get that entry throughout the circle. Finally, Black Esports Bear, he want to defend his compound, trying to get that knock against the number 4. Team number 4, they have their numbers game advantage. They can, in fact, now they got an opportunity to push against this team, and they are heading towards this team. Black Sports Bear, he needs to revive his teammate and also defend his compound, but the throwables will be used, the utilities will be used against them. And also Black Sports Sark, he has been taken down once again, and Gil, that final connection from his M4. In fact, DP, गाइस ये मैं क्या देख पा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक ये सीन. डीपी कब से इंक्लूड होने लगा मिरामार में? ई स्पोर्ट्स के हिस्ट्री में पहली बार मैं देख पा रहा हूँ डीपी मिरामार के मुकाबले में. मिस्टर सामुराई चले दूसरी ओर, वो नॉक निकाल रहे बैक टू बैक. मिस्टर सामुराई वो नॉक शानदार तरीके से निकाला, लेकिन फिनिश तब्दील करना पड़ेगा. 3 नंबर 18 के वो खिलाड़ी वीके स्पोर्ट्स अभी भी रिवेल गेम देते हुए, लेकिन सर्कल का एक और शिफ्ट मिस्टर स्पोर्ट्स को छोड़कर 3 नंबर 4 के खिलाड़ी के पास जाएगा. 4 वो फिनिशर्स इनके पास मौजूद, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग ये अपडेट के बाद डीपी का
इंक्लूडमेंट इनफैक्ट हमें देखने को मिला मिरामार के इस मुकाबले में। और आखिरकार वीके स्पोर्ट्स उनका हो चुका है पतन। मिस्टर स्पोर्ट्स के सामुराई एक फ्रैग अपने टीम के लिए बटोरा। मिस्टर आइजन उन्होंने वो एक फिनिश अपने टीम के लिए बटोरा ज़रूर। बैक टू बैक यहाँ पर बर्स्ट हमें देखने को मिला। मिस्टर आइजन ट्राइंग टू गेट इट नॉक बट द डैमेज will not be sufficient to take that player down. Finally, top 5 teams, 13 total players. This is a fight between these top 5 teams. And also guys, जो भी बंदे देख पा रहे इंग्लिश कास्टिंग कैसा लग रहा है बताना स्टार्ट के मतलब हिसाब से, क्योंकि पहला ये कास्टिंग है, हल्की हल्की से हम कोशिश कर रहे हैं ज़रूर। फाइनल टॉप 5 ये टीम्स, 13 टोटल ये प्लेयर्स मिरामार की इस मुकाबले में अभी तक सर्वाइवल कर रहे हैं, लेकिन साउदर्न छोर पे सिंस 2018 एंड इस टीम इज these two players they need to get through the circles, get through the in fact safer side of the play zone. But team number 4 they are ready to gatekeep their opponents. चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से gatekeep सिनेरियो बना सकते हैं. They have got the numbers game advantage within their side and also a decent area inside the circle. Finally DLT repeat, he gets since 2018 knocked down and he wants to finish that player. Mr. Engineer was the one and only player left from his team, and also DST Beast a great connection with his M4 and takes DLT Beast down. Finally a certain retaliation from the number 4 who wants to gatekeep their opponents with the numbers game advantage. This team they are still trying to get their finishes. फाइनल टॉप 4 टीम्स के बीच में ये फाइट, 4 फिनिशर्स मौजूद है गरीब सैगी और उनकी टीममेट्स के साथ. DLT स्पोर्ट्स वो एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैकलाइन से 3 नंबर 20 का आगमन होता हुआ विफ्लेस उन्होंने डाउन किया एक और खिलाड़ी को. वो पहला नॉक अपने टीम के लिए निकालेंगे. विफ्लेस एक और खिलाड़ी को नॉक करना चाहते थे, वो डैमेज उनकी ओर से आया, लेकिन मिस्टर असॉल्टर वो फाइनल नील इन द कॉफिन, वो फाइनल कनेक्शन अपने टीम के लिए बटोरेंगे. एंड मिस्टर असॉल्टर 3 फिनिशेस के साथ बेहतरीन तरीके से डोमिनेट करते हुए अब ये फाइनल टॉप 3 टीम्स के बीच में ये फाइट 3v3v इनफैक्ट 3v2v4 का ये सिचुएशन. DLT स्पोर्ट्स 2 खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन अभी भी वो मनोबल पूरी तरीके से मौजूद. इस टीम के पास मौका कवर बनाकर खेलने की कोशिश है, सर्कल का एक हिस्सा इनके पास मौजूद. मिस्टर स्पोर्ट्स के वो प्लेयर्स वो भी हार मारने का नाम नहीं ले रहे, भले वो नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज हो, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं, वो फाइट अप करेंगे ज़रूर, फाइट बैक करके दिखाएंगे ज़रूर. 3 नंबर 4 6 फिनिशर्स 1 नंबर्स गेम का एडवांटेज, और ये चिकन डिनर लेने के लिए बिल्कुल से तैयार. ये टीम सर्कल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, एक लौती एक मात्र ये टीम जिनके पास 1 नंबर्स गेम का एडवांटेज आखिरकार स्पॉट किया गया. लेकिन DLT बीस्ट एक शानदार कनेक्शन मिस्टर आइजन को करे डाउन, लेकिन सामने से वो नीच का प्रहार, उनसे बचना पड़ेगा. आखिरकार मिस्टर स्पोर्ट्स वो 4 खिलाड़ी मौजूद है, स्मोक के थ्रू सर्वाइवल करने की कोशिश. DLT बीस्ट विद दैट जंप ग्रेनेड वो नॉक टिकाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, बट साइड लाइन से मिस्टर समुराई ने उनको स्पॉट किया, वो डैमेज आउट करते हुए अपने ओपोनेंट को. एंड ऑल्सो फोर्स इन करेंगे मिस्टर स्पोर्ट्स के समुराई 20 को फॉल बैक करने पर. एंड दैट ग्रेनेड वाज वेरी क्रूशियल, एंड दैट ग्रेनेड विद द ग्रेनेड ही गेट्स दिस प्लेयर डाउन. DLT बीस्ट डाउन टू 1 लास्ट प्लेयर अर्पित. एंड ऑल्सो मिस्टर गिल और उनके टीममेट्स यहाँ पर रश करना चाहते हैं, और देखते ही देखते विफ्लेस को डाउन किया. विफ्लेस का ये फिनिश अपने नाम करेंगे अर्पित. जाते जाते एक और खिलाड़ी को समाप्त किया. वेपन रिलोड पे जाएगा. AKM वर्सेस AKM की ये फाइट, उन्होंने फायर करना छोड़ दिया, वरना डाउन करके जा सकते थे. मिस्टर गिल वो घुटनों के बल लाएंगे. मिस्टर आइजन बहुत ही ओपन में नजर आ रहे. UMP का ये प्रहार मिस्टर आइजन को करके जाएगा डाउन. गैरिब सेगी मिस्टर असॉल्टर वो हील अप होते हुए, गिल वो घुटनों के बल नजर आएंगे. मिस्टर असॉल्टर अब बचेंगे इकलौते प्लेयर जिस टीम के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज था, वो बैकफुट पे ढकेले जाएंगे. MG3 मौजूद है, गरीब सेगी मिस्टर डिस्ट्रेंज को समाप्त किया उन्होंने. आइजन इनफैक्ट सेगी एंड मिस्टर असॉल्टर अभी भी जीवित है. विफ्लेस और उनके टीममेट्स उनके पास वो नंबर्स गेम का मौका था, एडवांटेज था. मिस्टर समुराई को स्पॉट किया गया. असॉल्टर वो नॉक निकालने की कोशिश, वो फिनिश अपने नाम करने की कोशिश. 10 फिनिशेस का विनर चिकन डिनर आएगा जरूर, और एक गेम के साथ वो फाइनल कनेक्शन बनाकर एक ये बेहतरीन विनर चिकन डिनर पुल ऑफ करके दिखाया.
एक शानदार एक बेहतर शुरुआत करके दिखाया गरीब सैगी और उनके टीममेट्स मिस्टर एसोल्टर थे, जिन्होंने वो आखिरी कनेक्शन बनाकर अपने टीम के लिए वो बेहतरीन 5 फिनिशेस बटोरे। 10 फिनिशेस, विनर विनर चिकन डिनर बिना मार के इस मुकाबले में पुल ऑफ। फाइनली जो भी बंदे देख पा रहे मेक श्योर करना आप सभी लोग लाइक करें स्ट्रीम को, और जो भी भूल चुकी हुई है हमारी इंग्लिश कास्टिंग में, सभी लोगों से दरख्वास्त है हल्का सा वो आप सभी लोग रिकमेंड कर सकते हो हमारे चैट सेक्शन के अंदर, आप लोग बता के जा सकते हैं कहाँ पर सुधार की नीड है। एंड फाइनली हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए अलविदा लेते हैं। टिल देन मिलते हैं हमारे आज के दूसरे मुकाबले में। और जिन्होंने भी अभी तक गेमरनो स्पोर्ट्स के वेबसाइट को ज्वाइन नहीं कर रखा है, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है जल्दी से साइन अप करना एंड रजिस्टर करने के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू ही इनफैक्ट चांस मिलेगा। दर्शक जनों 3000 प्राइस पूल का टूर्नामेंट बहुत ही जल्द हम लोग लेके आ आएंगे, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी लोगों को साइन अप करना पड़ेगा गेमरनो स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे। और जो भी क्वारीज आपके पास रहेंगे, एनी डाउट्स एनी क्वारीज, आप सभी लोगों का सॉल्व किया जाएगा। बस आपको करना है डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन, एंड वहाँ पर आप लोग अपने क्वारीज लेके आ सकते हो। टिल देन गाइस, एक छोटे से ब्रेक के लिए इजाज़त लेता हूँ, मिलते हमारे दूसरे मुकाबले में।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है एक और बार। Caster Saddle in this side welcomes each and every one of you towards the second match of the day, which will be played in the map of Rondo. Finally, our plane which will be heading towards the map of Rondo quite a bit. Let's see the plane path. Finally, we can witness two plane paths in this map of Rondo. Rondo, which provides an extra recall for these athletes to get that extra finishes during the start of the match, but only few and quiet teams that tend to use that, in fact utilize that recall factor. But guys, we can see one plane path heading from Nachuan towards Tinglon Garden, and also another plane path starting from Banley, which will be heading towards Jadena City. Hot drops and that starting fights, that initial battles, we are already in a words to witness that fights, but still these players, they'll all have got an extra opportunity to utilize that recall factor. Yulin, we can see quite a few teams heading towards Yulin, and also Test Track and New York's Factory. These two drops, usually in every match of Rondo, we can see teams heading towards these drops. Finally, the fights had been started. In fact, Dr. Babulal, back-to-back connection from his S12K, he takes down two players, and also a very great start for his team. Now he can easily revive his teammates. Friends, those are witnessing our stream, make sure you hit that like button and also subscribe to our channel. And I can see some of you might have seen, in fact face some problem while witnessing our stream. You all guys can refresh and also get back again to the live action. Finally, the drop class had been started, the fights have been started. Yulin, we can witness more than 5 teams currently fighting against each other in this drop of Yulin. HB Smokey OP, he wants to take the fight. He has an abacan using the dry pick. He wants to knock that, in fact, player. UE legal, quite a bit retaliation from his side. He has a micro Uzi, which will be quite lethal for this close encounter fight. चले गाइस, जो भी बंदे हल्का सा देख रहे हैं हमें सपोर्ट करना. But this player, he gets his opponents down. Playboy Carty finally gets the 2 finishes. This team, a very great start currently, but HB Smokey, he has been spotted out. The damage has been already infiltrated for him, but he will have to heal up again. He will have to wait for his cover. Currently he is trying to get it knocks down. चलिए भाई लोग बढ़ते, चलिए ड्रॉप क्लास पे हल्का से हिंदी कास्टिंग कर लेंगे, थोड़ी देर बाद दोबारा से भरेंगे हम लोग. लेकिन फाइनली 69 players, 24 teams, they are still alive, they are still getting an opportunity to fight against each other. They want that initial knocks, they want that initial finishes. Also VK Luffy, he takes another player down. DLT Esports BC has been taken down. Smokey has been taken down. His teammate was present there trying to give a cover fire, but Playboy Carty, Tumtino KMKC, he gets that final blow, and finally he eliminates the team out of this match. 23 teams, 67 players, they are still alive and they are still fighting. This is the 4th stage of the match. In fact, Rondo, we are witnessing more than, in fact, 4 drop classes. Certain teams, they also try to get the finishes very early. Goalie is live, he is knocked down. Currently he needs a revival. Contendero, he will have to take his opponent down before reviving his teammate, but finally the revival is been given. This team, they have a chance of resetting once again. And finally एक और टीम, बहुत ही मुश्किल है गाइस इंग्लिश कास्टिंग करना. तुम तीनों की एम कैसी
यूलिन के अंदर एक और बार डाउन किया उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को। गाजा बचेंगे इकलौती उम्मीद, एक 1v4 क्लच करने की मौका है इनके पास। ये बेहतरीन स्प्रे और साथ ही साथ सिंस 2018 का वो तुरंत रिटालिएशन ट्रेड एंड गाजा और उनके टीममेट्स उनका भी समापन हो चुका है 22वें पायदान पर। दर्शक जनों, एक शानदार शुरुआत। Team number 3, they are off to a great start and also 5 finishes, 4 men in fact standing. Again they got a chance to revive their teammates, and Yulian finally the one and only team who has conquered this drop of Yulian, and they will be heading towards other fights again within a while. VK Esports, they also have headed to a very great start, 3 finishes with 4 men standing. Finally Lavis Zotti has spotted a player with place. Certain connection had been made, but with place in fact he will be lucky enough to get that cover. with place, चलिए बहुत ही लकी रहेंगे, वो कवर्स पे प्रोन डाउन होने पर मजबूर किए गए, लेकिन एक ग्रेनेड मौजूद, इनफैक्ट 5 वो ग्रेनेड्स, 5 फ्रीकिंग ग्रेनेड्स विद दिस प्लेयर, और यूज़ करना जंप ग्रेनेड थ्रो करके DLT स्पोर्ट्स के जोरों को डाउन करके जा सकते, लेकिन अभी भी वो थ्रोएबल करना बाकी है। इनफैक्ट 3 नंबर 10 वो समाप्त होने के बहुत ही करीब है। 3 नंबर 10 जोरो बचेंगे इकलौती उम्मीद। इनफैक्ट इस ड्रॉप क्लास के अंदर बाकी के बच्चे 2 टीममेट्स इंतज़ार करेंगे अपने टीममेट्स को रिवाइवल देने के लिए, लेकिन दूसरी ओर 3 नंबर 20 उनके पास वो मौका। 65 खिलाड़ी 19 टोटल ये टीम, फ्लिन और उनके टीममेट अर्पित। इनफैक्ट फ्लिन का समापन हो चुका है, अर्पित उनको रिवाइवल दिया जाएगा। फ्लिन एक और बार उनको रिकॉल दिया गया। जोरो अकेले फंसते हुए, बहुत ही ओपन ग्राउंड पे खिलाड़ी मौजूद है, वो 100 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हल्का सा वो डीप क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन चलिए थोड़ा सा पीछे जाकर वो डीप बनाना पड़ेगा। सामने से एक और टीम, इनफैक्ट 2 टीमें उनको यहाँ पे समाप्त करने के लिए बिल्कुल से तैयार है। एंड ऑल्सो 3 नंबर 24 जो फिनिशर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नॉक निकालने की कोशिश ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, चेंज सीट करके T4 किकिंग, वो नॉक निकाल के जा सकते थे, लेकिन डैमेज इनफिल्ट्रेट होगा। T4 किकिंग, द कनेक्शन हैज़ बीन मेड, he is already down on HP and he wants to fall back towards the cover, but he needs to keep that in mind that 4 players are still arriving towards him. And also T4 kicking, he needs to fight, but since 2018 is certain a good connection with his M4 and takes his opponent down, but HBF Kratos instantly he recalls his teammate, and this team, they are again 3 men. Collectively they will fight again, but also team number 25, these 2 players, they also want to start a fight, but NS Devil, he has been taken down, he needs the revival. TNG Nightmare, he has used the smoke and he will be quite lucky enough to reach to that hard covers. The damage was been made. TNG Nightmare 05, the West saved him from getting eliminated, and now the revival has been made. These 2 players, they are again ready, but that grenade, that on point connection, that on point grenades by CY and Busan takes the player down, and as they will trying to get healed, and now he will be reviving his teammate again, but CY and Esports, they got an opportunity to rush, and also they will make sure that they eliminate these 2 players. The numbers game advantage is already in the favor of CY and Esports. Oxy, Sark, Busan, they are trying to charge in, they are heading in towards their opponent, but they will have to make sure that collectively they need to push against their opponent. Finally above with him, Sark, he is trying to get the player down. Finally the footstep has been seen, the player has been seen, and a right pick with a knock, certain connection has been made, and also his teammate charges in, and with that as well he takes his player down. TNG Nightmare, another team which has been eliminated in the 19th position, but another team is still waiting for the third party enclosure. CY and Sark back to back knocks from his side and also takes another player down. The team which was preparing to get a third party enclosure has been taken down, a teammate has been knocked, and CY and Sark and his teammates, they are heading towards their opponent. They wants to rush bow. Currently he's been using this bow. Another connection from his teammate. He was trying to go
for a solo fight, but he has been forced down to fall back, and a certain comeback. Team number 22, they are fighting back. They got the 2 finishes. Soye plays a very great connection with his S12K. He takes 2 players down and 2 finishes for his team. But CY Esports, they wants to avenge their teammate. Let's see. This is a 2v2 fight between these 2 players. In fact, 2 teams. Soye, a very great assaulter, taking crucial knocks for his team, getting that crucial elimination for his team. But CY Esports Nick, he wants to charge in with a grenade. This grenade can be crucial. This grenade will be a decider one, but this grenade could not in fact damage the player. Finally, Nick, his throwables has been exhausted. His utilities has been exhausted. He needs to fall back, make use of the covers, in fact, wisely, and then try to attack. But CY Noxy, that crucial knock from his side. Soye plays. His teammates has been recalled. Zoro, he also wants to participate in that fight. Soye plays. He wants to give revival to his teammate. He has an option to revive his teammate. A certain time has been given, and Soye plays. Finally, Soye plays. He needs to take this fight with that S12K. He needs to defend his compound. He needs to make sure that he eliminates his opponents. But these 2 teams, they are taking the damage of the circle as well. Finally, the circle starts to move in. The first stage of the circle, in fact match, the first circle has been shrinking properly. Another shift of the circle, which will be quite far from these 4 teams. 2v2 fights between these 2 teams, which we are witnessing currently at the moment. But another team, finally Soye plays. He decides to charge in with the jump shot. He gets that player down, but Oxy with an initial, in fact instant trade, he knocks Soye plays down. But Soye plays, he will be getting a chance to get revived, because Oxy, only one option left with him is the fallback, because he needs to recall his teammates. But so in fact Oxy, he still wants to give a fight back. Let's see, can he pull off this 1v3 clutch, which will be quite an astonishing moment for all of us. Oxy, he's still waiting for his opponents to show up, and then Epitherin spray, ये कनेक्शन बनाकर दिखाया ज़रूर, एक शानदार कनेक्शन. He takes 2 of the players down, but now he wants to fall back. He wants to give recall to his teammates. Oxy, he could have went for that fight, but the pressure is on him to give the recall to his teammates. He has an option to give recall and again start freshly with his 4 players. MVL Esports on the other end with this Dacia, they are heading on towards their opponent. Manish takes another player down with that S12 kick. The correction was in fact very well, and Manish is still driving. Victor was the player who took the player down, and finally another finish, another confirmation will be claimed by this team. MVL Space, VK, he needs the revival. VK, he has been taken down. The smokes are needed to be deployed, but Victor, another player from MVL Esports, which is in the earth to in fact being confirmed. MVL Suhas, that crucial moment, the last player of the team has been taken down by team number 7. Team number 7, although they have lost their player Ghost, but now Sign X4, he will be the last player alive from his team. Finally, the revival is being given. चलिए भाई लोग, बताना उतना फ्लो में नहीं कर पा रहा वो कास्टिंग जैसे इंडी कास्टिंग करते हैं, लेकिन फाइनली साइन X4 उन्होंने अपने टीममेट को रिवाइवल दिया. एक 1v3 कस्ट करने का मौका, तुम तीनों की MKC उनको डाउन किया, फिनिश करके जाएंगे. बेहतरीन ये नॉक्स उन्होंने अपने S12 के प्रहार से निकाला सामने. UMP का प्रहार, एक और बार बेहतरीन जंपशॉट करने की कोशिश, लेकिन UMP का डैमेज आएगा. वेपन रिलोड पे गए, M4 पे स्विच करना चाहते थे. ये बेहतरीन कनेक्शन, बैक टू बैक नॉक्स फ्रॉम साइन X4.
बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये नॉक्स निकाले, वो फिनिशेस में तब्दीली करके दिखाया। वन लास्ट प्लेयर, टीम नंबर 3 ट्राइंग टू गेट दिस क्लच। मिस्टर इंजीनियर रिलोड पे जाएगा वो वेपन और आखिरकार मिस्टर इंजीनियर उनका भी हो चुका है समापन। सिंस 2018 उनके पास मौका अपने टीममेट को रिकॉल देने का। एंड अब सर्कल का एक और शिफ्ट वेस्टर्न एजेस की ओर फेवर करता हुआ। द सर्कल, द स्टेज हैज बीन सेट, another shift of the circle towards the western edges of the map. Finally, Hungsan, we can see another team which is quite, in fact, in the center of the map. 53 players, 16 teams are still alive. VK Esports Gunfark, he gets another player down. That crucial knock for his team, and he will be trying to get a confirmation. Finally, the fight for this western edge. VK Esports Luffy, he takes another player down. VK Esports off to a very great start. 5 finishes, 4 man strong, still alive in this match of Rondo. And towards the front, BPT Esports, they were trying to contest for that position, but BPT bloodlust. In fact, he needs to get that player down. Aegis and Bloods, these two players. In fact, Aegis, he is trying to revive his teammate, and the time, in fact, timely, he will be reviving his teammate. And again, this team, they are off to fight against their opponents, VK Esports. 3 players are still alive. Contentado, he needs to heal up and again participate in the fight, but his helmet has been taken down. Currently, he is taking another painkiller from his teammate. VK Esports, a very great start, 6 finishes, 4 men standing. This team has the control of the western sides of the map, but Hungsan, 9 finishes, 2 Tino KMKC and his teammates, a very great start in this map of Rondo. 9 finishes, and they are still on a verge to get the double digit finishes. Only 1 finish is required, but TLT Sports, BLT Devil, he has taken down another player, and now he will be ready to take that confirmation. But Raji, already low on HP, his teammate Devil in a verge of elimination, and Devil, he has been eliminated. Team number 2 fighting against team number 10. They have lost another player. Beast, he has been spotted. Raji trying to spray down his opponent, trying to get that crucial knock for his team, but the circle has started to shrink in. These 2 players now, they have to desperately move in towards the circle because the damage will be forcing them to get that entry. भाई लोग बताना कैसा कास्टिंग चल रहा है, जो भी बंदे देख पा रहे हैं। हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं हल्का सा इंग्लिश कास्टिंग करने की, धीरे धीरे इसे ही सीख लेंगे। आज ये पहला दिन है, इसीलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और सर्कल का शिफ्ट वेस्टर्न एजेस की और BPT स्पोर्ट्स एंड उनके बाकी 2 टीममेट्स, Aegis and his 2 teammates, they are heading towards the circle. They need to, in fact, find that hard covers for their team. But Zoro, he has been taken down. Team number 22, उनके पास वो numbers game का advantage था, लेकिन अब खिलाड़ी को खो चुके। Zoro has been taken down. Finally, this team has only 3 players left, and these 3 players, they need to fight to get a winner chicken dinner in this map of Rondo. Final top 52 players, top 16 teams अभी भी सर्वाइवल कर रहे हैं। रोंडो का मुकाबला बहुत ही रोमांचक, लेकिन दर्शकों अभी आप लोगों ने बताया नहीं कास्टिंग कैसे चल रही है, लेकिन ध्रुव को डाउन किया गया। GLC स्पोर्ट्स, उनको यहाँ पर ट्रेड में फंसाया जाएगा। सोए प्ले, आखिरकार उन्होंने वो ट्रेड नॉक निकाला, वो फिनिश निकाला, लेकिन अपने टीममेट को खो चुके हैं बदले में। एंड ऑल्सो सावधान छोड़ की FRT फॉर किंग, वो एक से प्रहार करने की कोशिश, एक बेहतरीन वो नॉक, और आखिरी खिलाड़ी सामने बच रहा था। एंड ऑल्सो डॉक्टर बाबूलाल, उनको डाउन किया गया था। क्रेटोस, वो क्रूशियल कनेक्शन अपने बाद अपने हेल्थ को रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन सामने से वो जंप शॉट आएगा। एक इंस्टेंट थर्ड पार्टी इनक्लोजर IRC टोमेटो, द थर्ड पार्टी गेट्स इन दोस एक्स्ट्रा फिनिशेस, एंड ऑल्सो 7 finishes, 3 men standing. This team off to a very great start, and now they are very close to the edge. Southern edges, in fact, are in control with this team.
ICR Tomato, 1 CR Tomato. In fact, this player a very great third party encloser by this team, in fact. And also Circle and Bit and his teammates. So a play a very great part of the Circle. They have acquired a quite decent position. They can still wait for other teams to get eliminated. Finally, 4 finishes. So a place is another level. He's in domination quite now, and now he will still await for getting more finishes in this match of Rondo. But towards the eastern side, there's Flynn. He has been taken down. A single player who is ready to take the fight. BLD Sports Santu 2v1. He needs to close this off. Another team wants to third party. Team number 23 DF decided to charge on, but this S12K connection was very better. Santu takes 2 players down. It's a 1v2 situation. Can he pull off that 1v4 clutch? One more player was ready to take the fight, and finally team number 23 Gunpowk was the player who took that crucial knock, who took that crucial finish, and he will be the savior for the team, and now he will be giving revival to his teammates. 34 players, 11 total teams which are still alive in this map of Rondo. Circle, another hardship of the Circle which will favor the eastern judges. Team number 23, they have in fact revived his teammates. Gunpowk, only 2 players are left in this team. बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस सेंटेंस फ्रेम करने में. चलिए बैक टू बेसिक्स, हिंदी कास्टिंग पे बढ़ते. फाइनल 32 ये प्लेयर, 11 टोटल ये टीम्स. गेमरनो स्पोर्ट्स को प्रेजेंट्स रेगुलर टीचर स्क्रीम्स. Each and every one of you are welcome, and each and every one of you can participate. All you have to do is sign up through our website and also register for regular teacher scrims, and also we organize Sunday showdown on a regular weekly basis with a prize pool of ₹500. So guys, in order to participate, you all have to join and also sign up and then register through our website. चलिए दर्शक जनों, वेस्टर्न एजेस की ये फाइट 3 नंबर 22 की ये प्लेयर सोए प्ले को डाउन किया गया. एन बेटा बचेंगे, एक आखिरी उम्मीद वो S12 के साथ चार्जिंग करने की कोशिश. एक 1v2 क्लच पुल ऑफ करना पड़ेगा अगर अपने टीममेट को बचाना चाहते हैं, लेकिन 3 नंबर 5 एक और खिलाड़ी का आगमन होता हुआ. एक एम का प्रहार, एक एम का कनेक्शन बेहतरीन. यूवी स्पोर्ट्स के रोजर वो फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो फाइनल कनेक्शन बनाकर अपने टीममेट के लिए वो कनेक्शन निकाला जरूर. मिस्टर पवन भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बताना कैसा लग रहा है. पहला ये कास्टिंग है इंग्लिश का, हिंदी थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक ही है, मतलब एवरेज बोल सकते हो आप लोग, लेकिन अब वो इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से कास्ट करने के. जैसे हिंदी में फ्लो है वैसे ही इंग्लिश में फ्लो आना चाहिए. वो 2-3 इनफैक्ट वीक्स के बाद वो ज़रूर, लेकिन फाइनली गरीब प्लेस उनके पास वो ऑफ एंगल मौजूद था. Since 2018 he has been taken down as well. Team number 3 in a verge of elimination. Team number 5, that Molotov will get that elimination done. 7 finishes, 3 players are still alive. They are trying to get that finishes. Team number 3 in a verge of elimination. 2 players has been taken down. Pradeep, he has been eliminated. Mr. Engineer and Tum Tinoki MKC. These 2 players need to take the trade game, and also they need to step up and fight against team number 5. Team number 5, these 3 players, they have the higher ground advantage, and also 8 finishes with this team. Tum Tinoki MKC, he tried to in fact knock that opponent, but he has been taken down as well. And the last player from Tum Tinoki MKC team has been taken down as well. Tum Tinoki MKC and his teammates, they have been eliminated in the 6th position. Another fight in the eastern edges. We can witness another team, BPT Sports, 7 finishes, 2 men standing. Final top 13 players and top 5 teams. Let's see which team will be taking this winner chicken dinner for their team in this map of Rondo, in fact. And also another team gets eliminated. Team number 17 GLC Rexin, he gets the final connection and also takes down another team. GLC Sports, the numbers game advantage are in their favor. In fact, this is the only team with 4 players alive, and finally 5 finishes.
a great start. They can pull off this winner chicken dinner if they still continue to save their numbers game advantage. And also now there will be a fight. It's a 2v2, in fact 2v4 scenario. BPT Sports, they are trying to fight against the team which already have that number game advantage, but UE Sports, they want to third party. They are heading towards the number 12 UE Sports Regal. Itachi, in fact, the 7 individual solo frag, he is on another level. This player is on another level. He's already taken down 7 solo elimination for his team. Another player has been spotted down. Itachi, he needs to fall back, but Itachi, he has been taken down in trade. Contendado, a crucial knock for his team, but the play zone has started to shrink in. Now it will force in Contendado, and another player has been spotted by Contendado. AKM, that spray was very brutal. Contendado back-to-back knocks from his side. 2 players has been taken down, but team number 9, they were ready to take that finishes for their team. Another player has been down. Jair burst. Rexin, he knocks that player. And also now team number 9, they are in a verse to get that winner chicken dinner. 6 solo finishes for Rexin. Total 8 teams, in fact 8 finishes for his team. Final top 8 players, top 3 teams. UE Sports, Itachi, he has been taken down, and Menace will be the one who eliminates another player. Team number 20 finally in the verge of elimination. The healings has been, in fact, and in a burst of a moment, guys, GLC Sports, they will utilize their numbers game advantage, and also 12 finishes winner chicken dinner they will be able to pull off in this map of Rondo. A great start for the day. Although the first match was decent, but in the map of Rondo, team will make a great comeback. Finally guys, जिन्होंने भी अभी तक स्ट्रीम देखा है, बता कैसा लगा हमारा इंग्लिश कास्टिंग. हल्का सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. दर्शक जनों, जो भी बंदे देख पा रहे हैं, मेक श्योर करना आप जेन्युइन रिव्यू दे दो. क्या हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा.
So hello guys, welcome back to another match of the day. दर्शक चैनल जो भी बंदे देख पा रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग लाइक करें and also hit that subscribe button. Finally guys, caster settled in this side. I welcome each and every one of you in another match of the day. This will be the third match of the day. Gamerno eSports co-presents regular T3 scrims with a prize pool of rupees 25, and also to participate in our regular T3 scrims you just need to follow a certain steps. You need to check the description, and in the description we have provided our website link. And also guys, do check out our website, and all you have to do is go sign up and then register to play our regular T3 scrims. And also Gamerno eSports has in fact always been providing with great prize pool, with great tournaments for the underdogs, with free prize pool, in fact with free of course entry. So your caster requests you to make sure to check out our website and also do sign up and register to play our regular T3 scrims. Finally, the first knock of this match since 2018. He knocks that player with a pistol. Finally, he got an bow. He's trying to shoot his enemy down, but the retaliation trade, that connection by Mantle01 will take 2018 down. And finally, the trade that came within timing. And also, it's a 4v4 fight between these two teams. The number 23 and Bait Mantle. So a plain proof they are ready to get that player down, but so a play, the MVP player of this team, he has been revived. And also Tumtinoki MKC, an instant trade from his side. He will take down NBIT 11 and he will be preparing to eliminate that player. He wants his knock player to get confirmed. Finally, he has a grenade. This grenade can be crucial. This grenade can be a decider one, but alone he is trying to get that finishes. Finally, the nade has been used. Will that grenade bring another player down? But Tumtinoki MKC, another angles has been created. Finally, one more player, a 1v1 tier fight, and also the trade. Tumtinoki MKC, he has been put down. The aggression has been stopped. Dhruv and his teammates, they need to charge on now. Mantle, so a play in fact with 10% HP is the final player of this team. He has spotted Mr. Engineer, but Mr. Engineer with his AKM, in fact UMP, pulls off another player, and the first team to get eliminated will be, in fact, let me check out their names. The number 23 will be the first team to get eliminated, and also 61 players are still alive. Finally, towards Georgia Pool, we can witness another fight. LSE Sports Ansul and his teammates, they are ready to get this drop class. They are ready to fight and also take the early finishes. Black Esports, Beer, he has been eliminated. Beer, a very early on elimination he has to face. But Black Esports, although they have 3 players, they will need to fight properly. They will have to scout properly. On the other hand, MRX Esports, Boss and his teammates, 3 freaking finishes, off to a very great start. These 3 players, although they have the number disadvantage, but these teams, they are already set to fight. They have already got 3 finishes for their team, and now a challenge of team number 11 is still pending in this drop of 70. BE Esports, they wants to get that finishes. They wants to fight against their opponent, but the numbers game advantage is still on favor of BE Esports. A pump shotgun with 0. He wanted to make that connection, but Boss with that off angle, he takes down Nate Jord. The numbers are equal now. BE Esports, they need to make the proper connection, but 0. The pump shotgun, he has choked the connection. And on the other hand, MRX Boss and his teammate, the back-to-back knocks from his side.
4th finishes and also acquiring that 5th finishes. This team is off to a very great start. BE Sports, Spanky and Blitz. Now all the pressure is on these two players. They need to pull off that clutch, and finally with that honey badger, he takes the player down. BE Sports Blitz, he currently finishes that knock player. Another player who was trying to come alone has been taken down, and the confirmation is also taken by Blitz. Now it's a final 1v1 between that player and Boss, in fact. But Boss, this grenade can be crucial. This grenade can eliminate those two players, but the grenade will not even damage that player. Spanky, he is very lucky enough. Although he was low on HP, he was not been taken down by the grenade. Severny, a very great start by, in fact, BE Sports. Although they have lost their 2 players, but in trade they got the 3 finishes. And now it is Boss in a verge of elimination. This team can be eliminated. Boss, he needs to convert. He needs to take a 1v2, and this is the last player. All those expectation has been set up on Boss Soldier. Let's wait and watch which will be the team who will be winning this drop class. And also finally another drop class in Georgia Pool. LSE Sports, Orcus, he was the player who got that crucial finish for his team, the initial finish for his team, but in return he has also been eliminated. MLVVK takes down another player with his UMP. Finally Severny, in fact the fight is in the verge of elimination. Mr. VK takes another player down. Mr. VK, the 2 crucial finishes for his team. A very great start by MVL Sports. In fact, HS Sports takes down BE Sports. In fact, Blitz has been taken down. Spanky will be the last player of the team. It's a final 1v1 situation between these 2 players. HSC Sports Boss, he wants to in fact rush in. He wants to take down that last player of the team, but BE Sports Spanky with the Scarrel, he will make sure that he eliminate the player. And also Spanky finally takes down that opponent and also revives his teammate. Guys, this is the first day that I'm trying to do English casting, so there will be quite a stoppage between the wordplays, in fact, and it is very tough to do English casting, guys. Hats off to Johnny. I guess each and every one of you know him, our Indian English caster. The wordplay that he makes during the gameplays. On the other hand, LSE Sports Unsold with that M4, he takes down Whiplace. Now switching that weapon, he needs to reload that weapon. The revival is been given there, but Unsold, he takes that player down. He takes that finish, but he needs to fall back. And also another team. Finally, Black Esports, they want to get that third party enclosure. They want to get those finishes. Black Esports wants to avenge their teammate. In fact, Black Bear was taken down on an early stage, but Godvans will be the last player of the team. Godvans, he needs to defend. He needs to take those 3 players down in order to save his teammate. But Godvans, he has a micro Uzi and a beacon. Finally, a smoke can be used, but Ansul, he was very low. And also Black Esports took another confirmation for his team. Monster will be the one who finishes VL Esports Ansul. LS Esports Ansul, in fact, Billa's shot, he has been also taken down. MVL Esports off to a very great start. 5 finishes. Manish, in return, he gets eliminated, but it's a decent trade for a very great start in the map of Erangel. Finally, 5 finishes, 3 men standing. This team, they can in fact hold in this forest compound for a quite while and wait for their opponents to show up. LS Esports Godfunds, the last player of the team. A lot more, in fact, expectations
and pressure on his soldiers. But Black Esports, they want to fight, they want to get those elimination. Garib Segi, he has been taken down. Mr. Assaulter and Tusar, the pressure are on these two players, and they need to defend their compound, but their opponents, they are trying to in fact retaliate with those throwables. Black Esports Sark, he has a Behtrin, in fact, what do we call Behtrin, guys? He has a very good off angle, and he can make sure he gets another opening knock for his team. With the AKM, in fact, he's trying to knock down that player, but team number 25, they are also closing in. They have the number game advantage and also the sound clues. They have the information. Certain teams, they are fighting in this modern city of Georgopol. Godvans, finally he wants to take the advantage of the higher ground. The last solo player of the team before his elimination wants to take extra finishes, and also Godvans, he will be ready and prepared to get those third party finishes. And finally Black Esports, they decide to rush in Mr. Assaulter and their teammates. Would they want to fall back to SAR? Finally they are using tips and tricks, and also they also reposition themselves. 3v3 fight between these two teams, and finally Godvans, that off angle from his side will be very fruitful for him. Instantly he took a player down and also finished another player. Black Sark has been spotted. Black Sark, he needs to be in fact inside the cover. Finally he understood, but Godvans from this direction, again he can take another player down. Black Sark, he's in quite open, and now finally the spray down. Godvans, a decent connection from his side, but Black Sark, he survives the sprays. He will use the bandages and finally gets into the cover. Black Sark, now he got an opportunity to use that first aid, although that one finishes is in the name of monster, but they need to fight because play zone, the distance between them and the safer side of the play zone is almost 1536 meter. These three teams, they need to in fact either fight or leave for the safer side of the circle. But wisely, guys, 13 teams, 39 players, they are still alive, they are still fighting to win in fact in this map of Erangel. Garib Segi with that damaged vehicle wants to get rid of the fight. They wants to enter the zone, and finally these two players, they wanted to fall back, but the damage has already been done in the vehicle. This vehicle is on the verge to blast, but Garib Segi and his teammate AMZ Tusar finally gets rid of the fight and will be successful in falling back. And also another team, BPT Esports, with these four players. BPT Esports, they want to find a fight. Until now they have shown a passive approach in this map of Erangel, but they will have to step up and also look for the finishes. With this numbers game advantage, they can make proper use of it. Also CYN Esports with that Orc takes down TD Suraj with a in fact better headshot connection. And also CYN Esports, they are trying to rush against TD Suraj. TD Suraj, there is no way possible that this player will survive now, because CYN Esports, they are in fact already charging in with that vehicle run over. And also CYN Esports Sark pulls off the final, in fact first connection for the team. Sark, the first elimination for his team, the first finish he's able to scoop up for his team. And also it will be a 3v3 fight between CYN Esports and TD Esports. Will TD Esports show interest in getting advance of their teammate Suraj, or CYN Esports will be charging in forward to get those extra finishes? MVL Esports, back-to-back knocks from their side. MVL Esports is on another level domination. Suhas has been taken down, and also Victor, it's a very big mistake peeking in the open. Now MVL Esports off to a last player, VK. His position has been revealed while he needs to survive
He needs to give revival to his teammates, but Mr. Sohas, he has been eliminated. Team number 25, although they have lost one player, but now is their chance to fight back, and also they are heading towards school apartments, and now these three players will be fighting against those two players of MBL Esports. VK, he is an off angle, and now he can take down those players. UMP with him, but that Molotov will be sufficient enough to make sure that team also awaits for rushing in. And also MBL Esports, his position was revealed. Next row plays that crucial grenade, that crucial knock for his team. Now this team will be heading on towards finishing MBL Victor. This team got the information, and Victor, he wants to spray down. He has taken down one player, but the S12K in retaliation trade, that connection on point from Contendado, that S12K connection will take another player down, and three finishes, three players are still alive. The Ayus OG, two players have been finished for this team. Team number 9, they want to in fact eliminate this team, but Soul, he has taken down a player with his UMP. Another player has been taken down. Back-to-back knocks. He wanted to finish the another player, but GLC Papa with the jiggle fire finally comes as a savior and will be saving his team. GLC Papa, that crucial 1v3 clutch from his side will save his team, and now the revival is being given. GLC Sports, once again they got a chance to fight like a 4-man lineup. The LTBs, another team with 4-man standing, they have got the numbers game advantage until now, but the finishes, the number count is already on 0. CYN Sports on the another hand, they wants to fight, they wants to show a fight back, but on the other TD Sports in a sandwich situation. Crazy, he needs to move on to the cover, but from backline he has been hunted down. Pradeep will be the player who will be taking down TD. Crazy, he could have utilized the cover. The sec was in fact very near to him, but Crazy finally since 2018 with his pump shotgun will eliminate the player and will get the confirmation for his team. 6 finishes, 3-man standing, and TD Sports now down to one last man, Anuj. All those hopes and all those expectations will be around Anuj's soldiers. Let's see how this solo player will give a fight back, or he will avoid the fight and head on towards a safer side. But Anuj, he wants to spot, he wants to spray down his opponents. Team number 2 still awaiting to find that final player of the team, TD Sports. And now Pradeep, finally he has spotted Anuj. Anuj with that vehicle, he wants to in fact make a cover, although Anuj's position has been revealed. Pradeep and his team is now, they have got the information. Will they charge in towards that mushroom tower? It will be questionable. But B Blitz, another team which is in very close vicinity, we can see B Blitz holding in this triple story house, but TLT Beast and his teammates, numbers game advantage are still in their favor. This team, they haven't put up to so even a single fight, but now they have to acquire the finishes. If they want to acquire those finishes, they need to take a fight against their opponents. Finally stage 3 का ये सर्कल. फाइनली गाइस बताओ ज़रा, इतना हम लोगों ने कास्टिंग करके दिखाया, हल्का सा कैसा लगा चैट सेक्शन में देखने वालों. अब चलिए हल्का सा इंतज़ार रहेगा गेमरनो स्पोर्ट्स की स्ट्रीम के लिए. और आखिरकार यहाँ पर फाइट करने की कोशिश. ब्लैक स्टार, ही इज़ वेरी लो ऑन HP. Flynn, he could have taken down that player, but he spots another player. The confirmation still awaits. Flynn, a very great spray, and he is able to take another player down. Black Esports, another player has been spotted. Flynn, back-to-back knocks from his side, and now this team will be ready to charge on Black Esports. Black Esports, a single player monster, in fact, who has been taken down as well. Stark will be the final player trying to revival his, in fact, teammate. And now Flynn, he will
also be ready to charge in. And also he has been changing the seat, and also he wants to spray down the opponent. Finally another grenade connection from DLT Arpit, and Flynn, he will be charging in. Arpit, he has been he has taken down two players, Black Sports Shark and also Black Sports. They have been eliminated in the 9th position. Another team wanted to third party Contentado and his teammates. They wanted to do the third party enclosure, but Flynn, he has been spotted out. Bloodlust, he wants to take the knock, but as of now Flynn, he have to fall back. They have to reunite again. DLT Sports, the reset has been done. Now they will be fighting against the number 25, but from the sideline Arpit has been spotted out. He needs to move towards the cover. Smoke has been deployed by Arpit. Another team awaits to eliminate DLT Esports, but DLT Esports, they need to face their opponents. They need to make sure that they hunt their opponents down, make sure that the numbers game are still in their favor. 3 finishes, 3 man standing, and also team number 25, they also want to eliminate DLT Esports. On the another side, Western Edges, fully we can see the cluster of many teams who would like to contest for the Western Edges. And also GST Sports, we have seen the name again in the kill feed. Garib Segi and AMZ Tushar, final 2 players from the team. But Flynn, he will be in fact he has taken down a player, but in retaliation trade Zoro, he will be taken down as well. Zoro needs the revival. Arpit, he will be charging on, he will be heading on to revive his teammate, but Contentado, the play zone is still damaging him. He needs to get in through the circle, but BPT Sport Bloodlust, Nextro plays, he will be taking charge of reviving his teammate. Both the teams, they will get an opportunity to revival and also reset. Finally, team number 10, the revival has been given, and his team again, it's a 3-man standing team. They wanted to fight, they wanted to wipe their opponents, but within the course of time, these 3 players have been reunited in fact, and now these 3 players have to fight against their opponents. BPT Sports, they are quite near in fact to the circle, and also they can gatekeep the number 10. Finally, Contentado, he needs to pull off an off angle. Contentado heading towards apartment, he needs to find a vehicle as well, but the circle is quite far away, 350 meters. He needs to still travel to reach to that safer side of the circle. Although his teammates, they have avoided the fight, and prioritizing the circle will be a better option for this team. And now BPT Esports will get the hold of this single story houses, northeastern control of the part of the map in their control. And another team who wants to rotate team number 2 since 2018, higher ground control has been taken by him. This is a very surprising in fact position. TSC Sports Synex 04 wants to scout in, wants to get a better place for their team, although 3-man standing, but the finishes amount is very low. 2 finishes, 3-man standing this team. Finally, they are in top 7. Also, even if they get eliminated at this stage, they will be getting that 1 placement point for their team as well. Team number 7, TS Esports sign. Those information will be very useful for this team, TS Esports. Also on the other hand, GLC Papa, he wants to fight against Tushar. This grenade could be crucial. This grenade can take down Tushar as well. But GLC Papa and his teammates, the numbers game advantage are in their favor. GLC Papa, 4 freaking finishes. This player is on domination, wants to take down another player, but number 4, finally Menace, he gets another player down, and the grenade was sufficient enough to kill another player and take down another team. Top 6 teams in front of us, although surviving in this map of Erangel. Team number 10, finally they got the opportunity to close in towards the circle, although they have the higher ground advantage. But GLC Sports,
The momentum is on their favor. They have got the momentum. They have got the finishes. They have got the number advantage. Team number 9, 7 finishes. Although they have lost their player Raxin, but these 3 players are enough to pull off that beautiful winner chicken dinner in this map of Erangel as well. Team number 2 then is to head on towards the circle. For a moment, the circle was with them for quite a long, but now the circle a certain hardship towards the southern edges, and DLT Sports and his teammates, they have got a quite better hold of the circle. Southern Shore, southern control they have been acquired, but team number 7 Gasu, he has been taken down. Ghost has been taken down. Synexor will be the last remaining player for the team, and all those hopes and expectation will be upon Synexor. Now this solo player will have to pull off extraordinary moves for that survival game. And also team number 2, since 2018 he wants to spray down their player. TSW Ghost, smoke was deployed by his teammate, but BPT Esports will be the one next row place who will be taking that frag for his team. Sign, the one and only player left from his team. And also Manes will be taking down DLT. Repeat, Manes, they wants to fight. They wants to pull off a fight against team number 10. They have been cornered. The smoke has been deployed. Manes with a grenade. Will this grenade be sufficient enough to eliminate DLT Esports? That crucial grenades, that throwables, that connection back to back from Manes. 2 players have been taken down. Flynn will be the last player of this team, and Flynn using the smoke, utilizing the cover of the smoke, wants to take down the opponents, but Flynn, he is still surviving. But Manas, finally that 2 frag will be in their favor. Ragnar will be the one who will be taking down Flynn, and team number 9 finally top 4 teams in front of us, and team number 9 pulls off another clutch, and Ragnar, a very big mistake by him going in the open. He has been taken down by Pradeep. Pradeep takes off another finish. LSE Sports got funds back then that his teammates were finished off, and he still manages to survive, takes his teammate team to the top 4. And also Mr. Engineer, he is spotting in, he is scouting. Finally Mr. Engineer spots Godfans, but Godfans, he needs to move towards the cover. Mr. Engineer, he has 3 freaking grenades, and now he will be utilizing his throwables. These grenades, will it be sufficient to take down Godfans? The damage has been done. Godfans, he needs to make utilize of the cover, but another grenade towards him has been thrown. Engineer, he has the chance to take another finish for his team, and Godfans, he is trying to heal up, but Mr. Engineer with that Groza pulls off, kills off another player and takes down another player. This will be the 9th finish for the team. Mr. Engineer, 4 solo finishes already on domination. Numbers game advantage are still in the favor of this team. 3-man standing, but Manes, will this player be able to survive? And also 2 teams, they are present, and Manes, he is in a sandwich situation. A nade has been deployed. Mr. Engineer, 1v1 situation for him. Throughout the smoke, he wants to adjust, but Manas with that S12K, he needs to retaliate as well. A timer grenade has been deployed, but Mr. Engineer, he wants to charge in. Within the smoke, he has been taking the TPP advantage, but the circle, now the circle will force in these players to finally move on. Team number 2 since 2000 has been spotted. Manas will finally take off another finish. Manas, this solo player, finally spots in Mr. Engineer, but Mr. Engineer with that Groza will be able to kill another player. This will be the 5th finishes for the team. Solo-handedly this player has acquired, and also a final fight between these 2 teams. The numbers game advantage in the favor of team number 25, and also BPT Sports next row place. He has been taken down by Play Zone. The kill feed has been sewn up. Mr. Engineer and Pradeep, they have the information. It's a 2v2 battle between these 2 teams, but yeah, finally Mr. Pradeep,
He wants to charge in Mr. Pradeep with the grenade. He wants to use the throwables, but Contentado with that grenade, he takes down Pradeep. Now it's a final 1v2 scenario for Mr. Engineer. With that, Groza will be able to pull off a clutch for his team, a chicken dinner for his team. And Mr. Engineer, although he has 5 finishes, but he needs to enter through the circle. The play zone will be damaging it. The play zone will be forcing him to move on forward. Top 10, in fact 10 finishes. Last player of the team. The covers he had until now. He need to move ahead from the cover. And also guys, team number 25, Contentado. He has a better hold of the circle. Trying to adjust within the smoke. 7 finishes already has been taken by team number 25. It can be a 8 finishes winner chicken dinner. A decent match in the map of, in the virtual map of Erangel. In fact, a nade has been deployed. Contentado with this extra 3 grenades, he can easily take down Mr. Engineer. Mr. Engineer, now he will have to move on towards the circle, but Mr. Engineer utilizing the, in fact, vision of the smoke, until and unless, yeah, from sideline, BPT Esports Bloodlust spots him down, hunts him down, and also takes a, in fact, very astonishing chicken dinner for his team. BPT Sports 8 finishes winner chicken dinner. Also Mr. Engineer, he tried to clutch, he tried to survive till the end, but the numbers game advantage was in favor of team number 25, and they make sure that they get the chicken dinner very easily. Finally guys, the third match of the day has been in fact ended, and also BPT Sports will be the team who will be finally getting the chicken dinner in this map of Erangel. Final match still awaits. Till then guys, stay tuned, and also make sure to hit that like button, and also subscribe to our official channel Gamerno Esports. And those who are waiting to play in our teacher scrims, you all also can participate in our regular teacher scrims in our weekly basis Sunday showdown with a prize pool of 500 rupees. And also both these tournaments and Sunday showdown is free of cost, and we provide a decent prize pool amount for the underdogs. So guys, make sure to check out the description. A link has been given for our website Gamerno Esports, gamerno.in. in fact, you can check out, and also make sure to sign up through the website, and also register to participate in our regular teacher scrims with a prize pool of 25 rupees. And to register, you all have to wait until 11 a.m. in the morning, and you along with your teammates can register and play on a regular basis. Till then guys, हम लोग मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. आज हमने कोशिश करी इंग्लिश कास्टिंग, एक चैलेंज हमने वो पार पाने की कोशिश करी है. अब देखते हैं हमारा कास्टिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हम बेहतर और करके जा सकते हैं. लेकिन जो भी बंदे देख पा रहे, मेक श्योर करना आप सभी लोग चैट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर से डाल देना, चाहे कैसा भी हो, पूरी तरीके से ऑनेस्टली आप लोग रिव्यू डाल देना. टिल देन गाइस, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद आज के दिन के आखिरी मुकाबले में, जो कि खेला जाएगा मीरामार के उस रेगिस्तानी मैप के अंदर.
Welcome back, friends. Once again, this brings in to our last match of the day. This match will be played in the map of Miramar. Finally, friends, we have witnessed quite a thrilling match of Erangel earlier before, but now 62 players, 19 teams, they are waiting to win a fight, to win this winner chicken in this winner in fact मैप ऑफ मिरामार. चलिए एक आखिरी मुकाबला आज के दिन का, आखिरी मुकाबले को चलिए हिंदी कास्टिंग से करते हैं. फ़िलहाल के लिए दर्शक जनों 19 टीम्स 62 प्लेयर्स फाइट करने के लिए बेताब होते हुए लाखों पेड़िया यहाँ पर हमें ड्रॉप क्लास देखने को मिलेगा. वी कैन सी एटलीस्ट अराउंड 3 teams who are interested to take drop class against each other in this drop of La Coberia. La Coberia is certain drop where 3 teams are in a verse to take those initial fights, those initial battles against each other. BPT Sports will be the one who will be ready to conquer this fight, to get those extra finishes, those starting finishes. TD Logan, he has been spotted down. TD Logan, he has been taken down, and the confirmation, he has been taken by BPT Joker is live. In fact, Joker is live, he has stolen the finish from their opponent. Team number 13, they have taken down TD Sports Logan, but the finish has been stealed. Also on the other hand, Hassan, in fact B Spanky and his teammates, they are preparing for a fight against UAE Sports, although the numbers give disadvantage within this team, but they are really excited to take the fight against BE Sports. The numbers game are in the favor of BE Sports, and also it's a 4v3 battle between these two teams in the drop off. In fact, San Martin Picado, there is another drop class waiting for us. The esports Kaiser already down on HP, he needs to heal up again, but the healings has been exhausted. He has to heal, but not even a single bandage is with him, so he finally takes a painkiller. He'll be taking the support of this painkiller, but his teammate, they are here to give the cover fire. Biswajit, that was a better connection, but it was not enough to take down the player. Also the weapon, in fact his ammunition has been exhausted. Biswajit, with that bow and arrow, he wants to damage out those players. Manes, previous match, a certain fight here pull off against the number 10. That 1v2 clutch was astonishing, but he needs to take up that momentum and carry forward in this map of Miramar. TD Sports Honey वो नॉक निकालेंगे लाखों पेरिया पे वो फाइट. एंड ऑल्सो दर्शक जनों लाखों पेरिया विटनेस करने को मिल रहा है 2 टीमों, इनफैक्ट 3 टीमों के बीच में ये ड्रॉप क्लासेस. TD स्पोर्ट्स फाइनली जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक नॉक निकाला, एक फिनिश निकाला. 3 नंबर 13 के ही खिलाड़ी को डाउन किया उन्होंने. 3 नंबर 13 उन्होंने ही वो चोटिल करने की कोशिश की थी. लोगन को उन्होंने डाउन किया था, भले ही वो फ्रैग जोकर इस लाइफ अपने खाते में लेकर गए, लेकिन अब ये आखिरी के ये मुकाबले में सफलतापूर्वक अंत करके जाने की कोशिश आज के दिन की अच्छी तरीके से. BPT स्पोर्ट्स अभी भी मौजूद. जोकर इस लाइव दे दो ब्लडलास एंड निंजा वाइटी के साथ. मिस्टर इंजीनियर एक और खिलाड़ी को नॉक निकालते हुए एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे. मिस्टर इंजीनियर ये पहला फिनिश अपने टीम के लिए बटोरेंगे. अपने टीम का खाता खोल चुके 59 टोटल प्लेयर, 18 टोटल टीम्स मिरामार के इस मुकाबले में अभी भी जीवित. लेकिन UAE स्पोर्ट्स वो फाइट करना जानते हैं. BE स्पोर्ट्स भी के खिलाड़ियों को परेशान किया जाएगा. BE स्पोर्ट्स नीजोट उनको भी समाप्त किया गया. UAE स्पोर्ट्स 2 फिनिशर्स शुरुआती सनों में अपने टीम के लिए बटोरा. रोजर अपने टीममेट को कवर देना चाहते हैं, हालांकि बॉन्ड वो चार्ज इन करने के लिए बिल्कुल से तैयार, एक हेड ऑन बैटल लेने के लिए बिल्कुल से तैयार, लेकिन अभी भी अपने प्रतिद्वंदी के बारे में उनको पता नहीं चला. जोरो उनके पास वो एंगल मौजूद है, जोरो वो नॉक निकाल के जा सकते. जोरो UMP और थॉमसन के बीच में ये फाइट हमें देखने को मिलेगा, और सामने से वो 2 खिलाड़ी चार्ज इन करना चाहते हैं, स्पॉट करना चाहते हैं. मोलोटॉफ सही ठिकाने पर थ्रो किया गया था. जोरो फॉल बैक करने पर मजबूर किए जाएंगे, और सामने से 3 खिलाड़ियों को अटैक राइट हैंड साइड पीक से यहाँ पर नॉक निकालने की कोशिश थी.
और आखिरकार ट्रोल किया जाएगा जोरो को। ब्लिट्स अब बचेंगे एक आखिरी उम्मीद, अपने टीम के इकलौते प्लेयर, लेकिन जोरो फाइनली उनका भी समापन हो चुका है। 3 नंबर 2 वो थर्ड पार्टी इनक्लोजर करने के लिए तैयार है। मिस्टर इंजीनियर थोड़ी देर पहले उन्होंने वो पहला नॉक अपने टीम के लिए बटोरा था और अब एक और बार फाइट के अंदर आगमन होता हुआ टीटी स्पोर्ट्स बीपीटी स्पोर्ट्स के निंजा वाईटी को डाउन किया उन्होंने, तुरंत समाप्त करके जाएंगे नॉर्दर्न छोर पे। लाखों एरिया पे ये फाइट हमें देखने को मिल रहा है और बीपीटी स्पोर्ट्स आखिरकार एक कैजुअलिटी उनको उठाना पड़ेगा। बिट्स अब बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी बी ई स्पोर्ट्स से एंड ऑल्सो यू इटाची, उनको बदले में डाउन किया गया। इटाची उनको रिवाइवल की नीड है, लेकिन ये कंपाउंड का हार्ड कवर, दिस हार्ड कवर्स of the compound will make sure that his teammate gets revival within time. And finally Itachi, he needs to heal up. If first aid is being used, almost 75% of his HP has been recovered, but he needs to move back, he needs to change his infect position. And also B esports bleeds the final player of the team, the one and only player, and all the pressures is upon the soldiers of B esports blitz. B esports blitz, he has a smoke grenade. Finally, with a mini 14 and UMP, he needs to pull the clutch off. And also the molotov has been thrown, the molotov has been deployed. In fact, U esports, they need to wait for a while until the molotov in fact makes a connection. Finally blitz, the stun grenade was thrown, and also the rush from Roger. Contendado will be the final player getting those finishes extra. TD Esports, they have been eliminated. Contendado 6 total finishes for his team, and 2 teams have been eliminated from the map of in fact from the match of Miramar. We have witnessed a draw clash between those 3 teams. Also BPT esports down to last man standing. Contendado will be the last player of the team, although they have got 6 finishes, but this team is also in a verge of elimination. One and only player Contendado will be the final player of the team, who will be playing for the placement point as well. Team number 2, they are trying to hunt down their opponents. UE esports, another player has been spotted. The damage was decent, the sprees was better, and the connection was full on point. But Biswajit on the other end, he takes Black Esports down. Black Esports, they have been trying to survive with the numbers advantage, but again another player comes in forward and takes Black Esports. In fact, Picado, एक और फाइट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस, आज के लिए बहुत है, कल हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फाइनली आज की आखिरी मुकाबले की कास्टिंग करते हिंदी में। गेमरनो स्पोर्ट्स को प्रेजेंट टीची स्क्रिम्स रेगुलर बेसिस पे 25 रुपीज़ का प्राइस पूल वेबसाइट के थ्रू आप सभी को साइन अप करना पड़ेगा और लॉग इन करके वहां से रजिस्टर कर सकते हैं हमारे स्क्रिम्स के लिए। एंड ऑल्सो संडे शो डाउन, 2 दिनों के बाद आप सभी लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। 500 रुपीज़ प्राइस पूल का वो शो डाउन रहता है और 3000 INR रुपीज़ प्राइस पूल का वो टूर्नामेंट बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे हम, और वो भी बिल्कुल मुफ्त एंट्री, तीनों ही। इनफैक्ट स्क्रीम्स टूर्नामेंट एंड संडे शोडाउन की मैं बात कर रहा था। बस आपको करना है हमारे गेमरनो ई स्पोर्ट्स के वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर, और वहाँ से आप लोग साइन अप करके जा सकते हैं। ऑल्सो ऐप भी लॉन्च कर दिया हमने, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे सपोर्ट है, आप सभी लोग इंस्टॉल भी करके जा सकते हैं। लेकिन 3 नंबर 2 फिलहाल के लिए 4 खिलाड़ी मौजूद। वो पहला फ्रैग निकालने की कोशिश, रोजर मिस्टर इंजीनियर को मिनी 14 के टैप के इस्तेमाल से डाउन करेंगे मिस्टर इंजीनियर। उनका फ्रैग रोजर अपने टीम के खाते में बटोरते हुए यूवी ई स्पोर्ट्स, भले ही वो नंबर डिसएडवांटेज के साथ शुरुआत किया हो, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट करके दिया इन्होंने अपने टीम के लिए। ये खिलाड़ी बेहतर तरीके से वो फाइट करना जानते हैं। रोजर एक और बार मिनी 14 से डैमेज आउट करने की कोशिश, उस खिलाड़ी के ऊपर वो डिसेंट डैमेज आया ज़रूर, लेकिन रोजर अभी उनको भी बचना पड़ेगा। रोजर हल्का सा डैमेज इटाची के ऊपर आया ज़रूर,
बैकलाइन पे सेंट मार्टिन के हायर ग्राउंड का कंट्रोल 3 नंबर 12 के खिलाड़ी CYN स्पोर्ट्स अपने खाते में जोड़ेंगे। वो इंतज़ार कर रहे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर करने का, लेकिन दूसरी ओर टी अर्पित ये खिलाड़ी तो ऑफलाइन चला जाएगा। ब्लैक स्पोर्ट्स एक मौका है उस आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त करने का, लेकिन क्या अर्पित उनका पोजीशन रिवील होगा वो देखने वाली है बात। मेंटली स्पोर्ट्स साइडलाइन से शोएब और उनके दो इनफैक्ट प्लेयर एक ही हॉर्स पे सवारी करते हुए, लेकिन जिस डायरेक्शन पे ये टीम जा रही है वहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक स्पोर्ट्स ने डेरा जमा कर बैठा है और ये व्हीकल लेने की कोशिश होगी। ये व्हीकल का साउंड क्या ब्लैक स्पोर्ट्स की खिलाड़ी को मिलेगा। फाइनली बियर सार्क और बहुत वो आखिरी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सार्क चार्जिंग करना चाहते हैं और वो व्हीकल जो कि उनके लिए काम आता 3 नंबर 21 की खिलाड़ी आएंगे चार्जिंग करके वो व्हीकल को अपने नाम लेकर चले जाएंगे। अर्पित क्या उन्हें स्पॉट किया गया। अर्पित अभी भी ऑफलाइन ये प्लेयर ब्लैक स्पोर्ट्स अर्पित को ख़त्म करके जा सकते हैं। बार कनेक्शन बनाने की कोशिश, इसके लिए कनेक्शन आया ज़रूर, लेकिन एनिमेशन से बनाएंगे वो स्टे करने के चक्कर में। ऑल्सो सेंट्रल इलाका तुम तीनों के MKC अभी तक एक कैजुअलिटी उनको उठाना पड़े। मिस्टर इंजीनियर उनका समापन हो चुका है अर्ली ऑन स्टेजेस के दौरान। फाइनल 43 टीम्स स्टेज 1 का सर्कल क्लोज इन होने के बहुत ही करीब 22 सेकंड का समय, और दूसरी ओर किंग प्लेस उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट का फ़ायदा उठाया, तुम तीनों की MKC को डाउन किया और अब उनके टीममेट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा अपने साथी को बचाने के लिए, लेकिन तुम तीनों MKC बहुत ही करीब है इनका एलिमिनेशन। और आखिरकार 3 नंबर 23 के ये प्लेयर हल्का सा वो ट्रोल करना चाहते हैं और क्या हमें वो वो मुक्केबाजी देखने को मिलेगी। फाइनली किंग प्लेस, यहाँ से किंग प्लेस अपने प्रतिद्वंदी को फिनिश करना चाहिए इनको। वो पैन निकाला गया, अब फाइनली हमें ये पैन का इस्तेमाल देखने को मिला, लेकिन सामने से सिंस 2018 अपने टीममेट का बदला लेना चाहेंगे। वो पैन का जवाबी हमला इनफैक्ट जवाबी कार्रवाई करना चाहेंगे। प्रदीप वो भी आगे बढ़ चुके हैं। एक 1v2 की स्थिति किंग प्लेस, क्या ये 1v2 को प्लस पुल ऑफ कर पाएंगे ये प्लेयर, लेकिन जैसे उन्होंने वो फिनिश में तब्दील करके दिखाया, यहाँ से निकलते बनेंगे, रिपोजिशन करते हुए नजर आएंगे किंग प्लेस। बेहतरीन ये चाल अपने प्रतिद्वंदी को अपने पीछे भगा रहे हैं। वो डेस्परेट मूव में गलती ज़रूर से हो सकती है 3 नंबर 2 के खिलाड़ियों के द्वारा। प्रदीप चार्जिंग करने के लिए तैयार है, वो स्पीड आउट करने के लिए तैयार, लेकिन मिराद बहुत ही तेज़ तरार रफ्तार की वो व्हीकल BGMI के अंदर सबसे तेज़ तरार ये 4 व्हीलर, लेकिन यहाँ पर प्लीज़ वो कवर्स पे जाना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अब प्रदीप ये रुकेंगे सिंस 2018, उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। किंग प्लेस वो नेट का इस्तेमाल पहले ही हमें देखने को मिल रहा है, प्रदीप के करीब ये जा सकते हैं ग्रेनेड, लेकिन किंग प्लेस अभी तक प्रदीप को स्पॉट नहीं किया। फाइनली प्रदीप का पोजीशन रिवील होता हुआ उस सैक के पीछे वो खिलाड़ी मौजूद है, डैमेज आएगा ज़रूर। नेट का प्रहार उसी डायरेक्शन में थ्रो किया गया, लेकिन बचना पड़ेगा इनको, हाथ में ये ग्रेनेड, सामने से वो खिलाड़ी चार्जिंग करने के लिए तैयार, एक रेको से करके ये प्री ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश थी, लेकिन सिंस 2018 का वो ग्रेनेड किंग प्लेस को डाउन करके गया। फाइनली वो रिटालिएशन ट्रेड एंड पैन का बदला ग्रेनेड से लेते हुए ये खिलाड़ी ब्लैक स्पोर्ट्स के बियर GLC स्पोर्ट्स के टीममेट इनको डाउन किया गया। GLC स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनको घुटनों के बल लाया गया ज़रूर, वो नॉक को फिनिश पे तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन GLC स्पोर्ट्स पहले अपने टीममेट को रिवाइवल देने की कोशिश हो सकती है। पापा वो डैमेज उनके ऊपर भी आएगा ज़रूर, एक्सिन उनको बचाने के लिए जोखिम उठाया पापा ने, और अब ये रिवाइवल इनिशिएट होता हुआ। फाइनल 41 players and 14 teams, they are still surviving and they are still playing to get a winner chicken in this map of in Miranda. Phase 2 in the first shrinking. Only 1 minute and 5 seconds are left. After that, this play zone will start shrinking, and many of the teams they are still out of the circle. They need to start their rotation and get to a decent spot within the playable area as well. 41 team, in fact players, 14 teams still alive, and they have survived the second stage of the Miramar. Finally, once again central position. This central area is full with cluster of certain teams. The number 14 Ser Lucky and इनके teammates यहाँ पर होल्ड करते हुए पावर ग्रिड का इलाका एंड ऑल्सो कॉन्टेस्ट करने के लिए ज़ैब्रोनिक्स और उनके टीममेट्स हाजिर हो चुके। 3 नंबर 21 वो भी क्लोज विसिनिटी में नजर आएंगे। नंबर्स गेम एडवांटेज 3 नंबर 21 के पास मौजूद। ये 14 टीम्स ऑफ फाइट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टेज 2 का सर्कल फाइनली श्रिंकिंग होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वो हार्ड शिफ्ट अनदर हार्ड शिफ्ट
we will be able to witness after the shrinking of the second stage circle. DLT Zoro बैक टू बैक नॉक्स निकाला उन्होंने यहाँ पे शानदार तरीके से कीप करने की कोशिश BPT नेक्स्ट प्लेस और हम इन दो खिलाड़ियों को अब ये भार संभालना पड़ेगा। अर्पित उनको रिवाइवल दिया गया और रीसेट गेम करके दिखाया DLT स्पोर्ट्स की खिलाड़ियों ने, लेकिन अम्मू और नेक्स्ट प्लेस वो अटैक करेंगे ज़रूर। उनके पास वो फ्रैग ग्रेनेड मौजूद है लेकिन सामने से स्मोक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्लेस अभी भी इंतज़ार करेंगे, वो स्पॉट कर रखा है उन्होंने अर्पित को डाउन किया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट प्लेस अभी तक अपने पोजीशन के बारे में इन्होंने कोई रिवील नहीं किया। फाइनली स्पॉट किया गया और अब यहाँ पे अर्पित का बचपना लगभग नामुमकिन। अर्पित तुरंत डाउन किया गया, तुरंत समाप्त किया जाएगा अर्पित को। DLT ज़ोरो वो जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं नीड के साथ, एक ये ग्रेनेड कारगर साबित हो सकते हैं। ग्रेनेड बहुत ही करीब जाएगा, नेक्स्ट प्लेस बहुत ही लकी रहेंगे, वो ग्रेनेड को सर्वाइव करके जाएंगे। नेक्स्ट प्लेस उन्होंने जवाबी कार्रवाई में ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश की थी, वो ग्रेनेड डैमेज करके गया और ज़ोरो आप उस डायरेक्शन से आगे बढ़ना आपके लिए भारी हो सकता है और देखते देखते अब उनका समापन हो चुका है। नेक्स्ट प्लेस अब बचेंगे एक आखिरी उम्मीद अपने टीम के ये प्लेयर, साइड लाइन से इनको देखा जाएगा और डैमेज इनके ऊपर आ सकता है ज़रूर। यहाँ से चार्जिंग करने की कोशिश, DVS के साथ ये प्रहार करने की कोशिश, 1v3 का ये प्रॉपर हेड ऑन बैटल, दो डायरेक्शन से इनके ऊपर अटैक बनता हुआ एक गेम से प्रहार करने की कोशिश, लेकिन वो ग्रेनेड डैमेज करके गया। लेकिन नेक्स्ट प्लेस तुरंत ही नॉक करके समाप्त करने की कोशिश थी और DLT बीस्ट समय रहते उन्होंने वो जंप शॉट का प्रयोग किया एंड देन एक गेम का कनेक्शन बिल्कुल ठिकाने पर और वो फ्रैग वो रिटालिएशन ट्रेड अपने टीम के लिए निकाल कर दिया उन्होंने। फाइनली एक और टीम सोए प्लेस एंड इनके टीममेट्स फाइट करना प्रेफर करें, दे प्रेफर टू फाइट एंड ऑल्सो टू कलेक्टेड फिनिशेस, दे हैव टू dominate within this fight and finally so a place Dhruv and Samir Ali वो finishes का खाता खोला नहीं। Currently with 0 finishes, this team trying to pull off those finishes, those crucial knocks, those crucial elimination for their team। गरीब सैगी बहुत ही करीब आएंगे, 3 नंबर 3 के ये प्लेयर स्पॉट कर रखा है उन्होंने 3 नंबर 21 की खिलाड़ियों को। असॉल्टर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तुषार ऊपरी छोर से वो हायर ग्राउंड का कंट्रोल तुषार के पास, तुषार विद दैट हायर ग्राउंड कंट्रोल ट्राइंग टू गिव कवर फायर टू हिज टीममेट गरीब सेगी एंड गरीब सेगी ऑलरेडी ही इज क्लोजिंग Zabronix, he takes down Weeflace, he needs to get revived and Mr. Assaulter, he deploys the smoke and finally he will be reviving his teammate and also this team, they will get another chance to reset once again. 4 man standing, that's only one finishes in the name of Weeflace. Pradeep on the other hand, back to back domination from his side. UAE Sports has been put in the back foot from Pradeep once again. Zabronix, he has been taken down. Zabronix eliminate हो चुके हैं। Zabronix का समापन किया गया ज़रूर। फाइनल 13 टीम्स 34 ये प्लेयर्स फाइट करने के लिए बिल्कुल से बैठा। आपने मिरामार का मुकाबला समाप्ति के बहुत ही करीब, तीसरे स्टेज का ये हार्डशिप जो कि पावर क्रिट के करीब गया था। स्विफ्ट इस भली एक टीममेट को खोया लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी मौजूद है और अब फाइनल टॉप 13 टीम्स के बीच में ये बैटल, 34 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग एंड अलाइव इन दिस मैप ऑफ मिरामार। फाइनली गाइस वंस अगेन, जिन्होंने अभी तक गेमरनो ई स्पोर्ट्स के वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, साइन अप कर ले एंड साइन अप करने के बाद सुबह 11 बजे हमारा स्लॉट हमेशा की तरह लाइव होता है, वहाँ पर जाकर आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हो और फ्री के टूर्नामेंट इनफैक्ट फ्री के स्क्रिम्स संडे शॉट आउट खेलने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे वेबसाइट पे आप लोगों को मौका मिलेगा रजिस्टर करने का एंड ऑल्सो टीचर स्क्रिम्स जो कि रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। 25 रुपीज़ प्राइस पुल का ये मुकाबला हर रोज़ गेमरनो ई स्पोर्ट्स आयोजित करती है, अंडरडॉग्स के लिए एक बेहतर मौका लेके आती है और अब उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। दर्शक जनों, एक बेहतर ये लॉबी फाइनली एक और खिलाड़ी का ख़त्म होता हुआ, इनफैक्ट समापन होता हुआ। 13 टीम्स जो कि सर्वाइवल कर रहे थे उस टीम का भी एलिमिनेशन होता हुआ और अब 33 प्लेयर्स, 12 टीमें अभी भी मौजूद, 9 सेकंड्स का समय एंड उसके बाद ये सर्कल श्रिंकिंग होता हुआ हमें देखने को मिलेगा ज़रूर। और दूसरी ओर तुषार वो इंतज़ार करेंगे, करीब से बहुत ही क्लोज जा चुका अपने प्रतिद्वंदी के
लेकिन यहाँ से वो थ्रोएबल की कमी इनको अब खल रही है। गरीब सेगी एक सरप्राइज अटैक वो प्लान करता हुआ, लेकिन अपने टीममेट्स का भी करना पड़ेगा इंतज़ार। तुषार यहाँ पर मौजूद है फ़िलहाल के लिए कवर प्रदान करने के लिए, लेकिन बाकी के इनकी टीममेट्स भी फ्लेस और उनके साथी असल्टर प्ले जोन के बेहतर इलाके की ओर बढ़ चुके। पिकाडो के अंदर वो टीम ऑलरेडी जा चुके, लेकिन अब बचा है बस 55 सेकंड का समय। उसके बाद हमें एक और हार्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा ज़रूर। करीब सेगी और तुषार वो फिनिशर्स पहले इकट्ठा करने की कोशिश है, लेकिन फाइनल टॉप 12 ये टीम्स and also 33 players, they are still surviving in this map of Miramar. 41 seconds are still left, and after that stage 3 circle will be finally closing in, and another hard save of the fourth stage will be witnessed. Ravindra takes down DLT Zoro with that M4. DLT Zoro will his teammates make sure to revive him. Also Apex Dave कवर फायर प्रदान करने की कोशिश। टीम नंबर 15 क्लोज इन कर चुका है Apex Dave. Yes, the chance to take down his opponent, finally providing decent cover fire to teammates. AK में switch करके, and this connection was better. This connection will force in team number 15 to get away from this side, and also team number 15 another player goes down. Premians, he has been taken down. Team number 14 they've got the chance to clean up and also take that elimination. Ravinda will be the last player of the team trying to use those bandages, but team number 14 Dexter, Soul, Sahilate, Serilaki, 3 total finishes, 3 men standing, still surviving in this map of Miramar. In fact, another fight between Soe Place and We Place. Soe Place, in fact, he takes down 2 player We Place, and team number 3, those 2 casualties, Tushar and Segi, has been taken down from their team, and now these 2 players, all the hopes and expectation are within the soldiers of these 2 players. Pradeep, this player is on another level. He has been taking down players constantly, but with only 2 finishes he need to in fact gatekeep. Team number 7 TLC Sports Jackson, he tries to in fact reunite with his teammates. A slight cover from the ridge will give him the time and also the opportunity to escape from this situation. Team number 2 ready to in fact reunite and play with his teammates. Pradeep, he wanted to get those finishes, those extra finishes, but it's a 1v1 fight between Pradeep and his opponent Nick, and also with this headshot connection, with the utilization of the same 4, Pradeep takes down another player. 6 total finishes, 2 men standing, and also top 10 teams currently they are surviving. Apex, फाइनली Apex की ओर से एक बेहतर कनेक्शन, और आखिरकार उनकी टीम में थे जिन्होंने वो कवर फायर प्रदान किया। DLT 20 ऑक का इस्तेमाल किया गया, वो फाइनल फिनिश निकालेंगे। और आखिरी की ये टॉप 9 टीम्स 23 प्लेयर्स दर्शक जनों समाप्ति के कगार पर मिरामार की ये मैच, और फाइनली मैच को देखेंगे ज़रूरी। स्प्रे बेहतरीन हो सकता था, वो कनेक्शन बेहतर करके जा सकते थे, लेकिन सर्कल के अंदर अब बढ़ना पड़ेगा। 207 मीटर का फासला इनकी और उस प्ले जोन के सेफर इलाके के बीच में। सोए प्ले GLC स्पोर्ट्स की खिलाड़ी को डाउन किया उन्होंने, बैक टू बैक वो नॉन सीरियस का प्रहार बेहतरीन। ये तीसरा फ्रैग अपने टीम के लिए, बट ये सोलो डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है सोए प्लेस के द्वारा। पिकाडो पे चार्ज इन करने का डिसीजन, अब यहाँ से 3 खिलाड़ी अभी भी बरकरार इनके टीम के पास। वो 3 प्लेयर बहुत ही क्रूशल स्टेज में सर्वाइवल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक और फाइट हमें देखने को मिलेगा। प्रदीप वो बैक टू बैक नॉक्स निकालते हुए अपने टीम के लिए एक और खिलाड़ी के सामने ये चुनौती स्टे डाउन करना चाहते। एक ही मोड के साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश, वो वेपन रिलोड पे गया, वरना एक खिलाड़ी नॉक निकाल सकता था। और अब 5वें स्टेज का सर्कल डैमेज करेगा, प्रदीप को भी फोर्स इन करेगा प्ले जोन के अंदर जाने के लिए। सिंस 2018 उन्होंने वो नॉक निकालने की कोशिश करी। GLC स्पोर्ट्स सेरलाकी को उन्होंने नॉक किया, तुरंत ही समाप्त करके दिखाया। टीम नंबर 14 अब बचेंगे एक लौती उम्मीद सोल साहिल 8 के रूप में। बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हुए प्लेयर धीरे धीरे से ही प्ले जोन के अंदर आ चुके हैं। वेस्टर्न
एजेस का कंट्रोल इस खिलाड़ी के पास। सर्कल एक और बार वेस्टर्न शोर को फेवर करता हुआ प्रदीप, दोबारा फाइट करना चाहते हैं प्रदीप। पीछे से अभी भी एक खिलाड़ी का आगमन होना बाकी, एक टीम का आगमन होना बाकी। कंटेंट दे दो, जो कि एक आखिरी प्लेयर है अपने टीम से, वो इंतज़ार करेंगे बिल्कुल एजेस पे। अभी भी 85 मीटर का फासला इनकी और उस सर्कल के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। सिंस 2018 कवर छोड़ने के कारण उनके ऊपर वो डैमेज आया था, लेकिन दोबारा से कवर के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। और देखते देखते कंटेंट दे दो, उनके पास वो ऑफ एंगल मौजूद था। सिंस 2018 वो इन्फॉर्मेशन की कमी उनको बैकफुट पर डालेगा, लेकिन प्रदीप बॉय ओ बॉय प्रदीप ये चौथा फ्रैग के साथ डोमिनेशन पे चाहता हुआ ये प्लेयर, और अब अपने टीममेट को इनफैक्ट रिवाइवल देने का मौका ढूंढा उन्होंने। वो नॉक निकाला, वो फिनिश निकाला तुरंत ही इंस्टेंट रिटालिएशन ट्रीट के चलते। सिंस 2018 उनको अब रिवाइवल मिल पाएगा। इसका कवर मौजूद है, लेकिन साथ में एक और टीम का आगमन होता है। वो दो खिलाड़ी चार्ज करने के लिए तैयार, AKM में स्विच करेंगे। ये फाइनल मैनेजमेंट बनाने की कोशिश है। AKM वर्सेस UMP के वो फाइट, और GLC ई स्पोर्ट्स सोल उन्होंने वो नॉक निकाले, उन्होंने वो फिनिशेस निकाले। बेहतर समय तो उन्होंने वो थर्ड करके दिखाया। वो फिनिश फीट पे ध्यान बेहतरीन तरीके से उनका हमें नज़र आया था, लेकिन विफ्लेस आखिरकार अपने टीममेट के लिए इनफेक्ट टीम के लिए वो नॉक्स निकालते हुए M4 और 6x का इस्तेमाल, वो नॉक निकाला गया ज़रूर, लेकिन सर्कल के अंदर अभी भी प्रवेश करना बाकी है। फाइनल टॉप 7 टीम्स, एक और टीम समापन के बहुत ही करीब। GLC रेक्सिन अपने टीममेट को बचाने के लिए वो जोखिम उठाना पड़ेगा, और फिलहाल के लिए रेक्सिन वो रिवाइवल देना चाहते हैं GLC पापा को। आखिरकार 21 मीटर का फासला इनको भी तय करना है प्ले जोन के अंदर जाने के लिए। हालांकि उनके टीममेट मेनेस ऑलरेडी सर्कल के अंदर प्रवेश करने की तैयारी कर चुके थे। मेनेस नॉर्डन शोर का कंट्रोल है, सामने से देखा गया ब्लैक स्पोर्ट्स की खिलाड़ियों को, लेकिन अभी तक वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रहे ब्लैक स्पोर्ट्स को। उनको स्पॉट किया गया, मैंने इसको डाउन करके जा सकते थे। ये स्प्रेज बेहतरीन होना चाहिए था, लेकिन फाइनली स्प्रे लेने के चक्कर में अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने। मिस्टर एसोल्टर और विफ्लेस बहुत ही ऑफेंस से रोटेट करना चाहते हैं। विफ्लेस को डाउन करेंगे, मैंने वो फ्रैग निकालने की कोशिश है, पहला फ्रैग अपने टीम के लिए बटोरेंगे, और देखते देखते प्ले जोन का शिकार बन कर गए मिस्टर एसोल्टर। फाइनल टॉप 6 टीम्स और सर्कल एक लौते खिलाड़ी सोहिल, इनफैक्ट सोल साहिल 8 के पास 3 वो सोलो फ्रैग्स इनके पास मौजूद। GLC स्पोर्ट्स के रेक्सिन को देखा गया, ये बेहतरीन बर्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैकलाइन पे 3 नंबर 21 उनको घुटनों के बल लाएगा। ड्रूफ बचेंगे एक आखिरी उम्मीद, टाइमर ग्रेन का इस्तेमाल करते हुए। ड्रूफ सामने 3 नंबर 7 के वो खिलाड़ी भी मौजूद है। GLC स्पोर्ट्स के सोल को देखा गया, ये बेहतरीन स्प्रे रेक्सिन के द्वारा एक और फ्रैग में इजाफा करके दिखाया मैंने। सर उनकी टीममेट्स बैक टू बैक को डोमिनेट करते हुए पिछला मुकाबला बेहतरीन खेल के दिखाया था। एक और बार वो शानदार प्रदर्शन, वो 10 फिनिशर्स पिछले मुकाबले में भी इस टीम ने निकाला, भले ही वो चिकन डिनर मिस हुआ था, लेकिन फिनिशर्स बेहतरीन था। और अब उस मैच की कमी मिरामार के मुकाबले में पूरा करना चाहती है टीम, चिकन डिनर के साथ अंत करना चाहते हैं आज के दिन की। एफएक्स से कॉप्टर में जाने के कारण उनके ऊपर वो डैमेज आएगा ज़रूर। सर्कल के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हीलिंग के पहले करना पड़ेगा, लेकिन सामने से 3 नंबर 6 का वो खिलाड़ी ब्लैक स्पोर्ट्स सार्क चार्ज इन करना चाहते, एक नीड का सामना करना पड़ेगा ज़रूर। सार्क उनका पोजीशन रिवील, ये ग्रेनेड घातक साबित हो सकता है, वो ग्रेनेड कारगर साबित होगा, टास्क करके गया ब्लैक स्पोर्ट्स के सार्क को, और ब्लैक स्पोर्ट्स सार्क अकेले आने की गलती खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन साइड लाइन से एपेक्स देफ उनको देखा गया, वो व्हीकल्स अभी भी मौजूद है, स्मोक्स अभी भी मौजूद है, स्मोक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पहले करेंगे अपने हेल्थ को रिकवर। 3 नंबर 7 एक लौती टीम जिनके पास और नंबर्स गेम का एडवांटेज, 3 खिलाड़ी मौजूद, 3 नंबर 21 के खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश। ड्रूफ उनको देखा गया, ड्रूफ प्ले जोन से अब यहाँ पर उनका शिकार होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ड्रूफ फाइनली उनका फ्रैग मैनेस एक और खिलाड़ी को डाउन किया, उन्होंने एक और खिलाड़ी का फ्रैग अपनी टीम के लिए बटोरा ज़रूर, लेकिन सामने से मैनेस फॉल बैक करना पड़ेगा, कवर्स पे जाना पड़ेगा। एक और बेहतरीन ये जवाबी कार्रवाई, मैनेस S12 का इस्तेमाल करके एक और खिलाड़ी को घुटनों के बल लाएंगे। एकमात्र ये प्लेयर, इनफैक्ट 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, रेक्सिन और मैनेस यहाँ पर चलिए जो चिकन डिनर मिस था उस चिकन डिनर को अपने नाम करने के लिए बिल्कुल से तैयार। सोल स्पोर्ट्स के साहिल, वो ग्रेनेड क्रूशियल साबित होता हुआ, वो ग्रेनेड काफ़ी था एक और टीम के एलिमिनेशन को यहाँ पर देने के लिए, लेकिन आखिरकार दर्शकों फाइनल ये मुकाबला था। GLC स्पोर्ट्स के रेक्सिन थे जिन्होंने आखिरी वो फ्रैग निकाला, एंड नाउ दे रहा है दुरुस्त है GLC स्पोर्ट्स इरंगल की वो कमी पूरा करेंगे मिरामार के इस मुकाबले में, अपने नाम ये चिकन डिनर करके
फाइनल मैच समाप्त हो चुका है। गेमर्नो स्पोर्ट्स की वेबसाइट को ज़रूर से चेकआउट करें, साइन अप जरूर से कर लेना है। ऑल्सो फ्री के स्क्रिम्स, वो भी 25 रुपीज़ प्राइस फुल के साथ। अगर आपको खेलना है तो आप लोग ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ऑल्सो रजिस्टर करना पड़ेगा। और संडे शोडाउन के लिए रहना तैयार। और 3000 प्राइस फुल बहुत ही जल्द गेमर्नो स्पोर्ट्स लॉन्च करने वाली एक और टूर्नामेंट। टिल गाइस, मैं आपका कास्टर इजाज़त लेता हूँ। बताना ज़रूर कैसा गया, इनफैक्ट कैसा रहा आज के दिन का कास्टिंग। चैट सेक्शन खुला है अभी भी, आप सभी लोगों को आ रहेगा इंतज़ार। मैं देखूंगा ज़रूर से, वो रिव्यू ज़रूर से लूँगा मैं। टिल देन गाइस, मिलते हैं। स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।